Did you hear about the Jean will be upset if she catches us lazing around like this. The prophecy in Fontaine? Oh no, what's happened now? Did you hear about the prophecy in Fontaine? The prophecy in Fontaine? Oh no, what's happened now? Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. हेलो एवरीवन की हालचाल सारिਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈਲੋ ਗ੍ਰਿਫਨ ਪਲੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੇਟ ਹੈਲੋ ਨੈਵਰਫੋਲਡ वेलकम टू स्ट्रीम योर ब्रो की हालचाल सो आज की स्ट्रीम शुरू करते हैं है ना कितना सोनियो की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ I'll race you there. Add Astro. हेलो साकी वेलकम टू द स्ट्रीम कैसे हो साकी अब दूसरे अकाउंट से आ जाओ एंड मैं भी अच्छा हूँ जस्ट मैं अभी उठा हूँ जस्ट 10-15 मिनट पहले This realm if you ever हेलो पोकीदीप वेलकम टू स्ट्रीम मेट हेलो कैमा स्वागत है आपका स्ट्रीम पे न्यू इवेंट है ना पोकीदीप नहीं ये पुराना इवेंट है ये आयाशा कुमारी कौन है साकी आप जिस मर्जी का रोस्ट करो पर प्रतीक का रोस्ट मत करना ठीक है we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine?
Well, yes. And... It seems you haven't heard yet. The theme of this year's Lantern Rite is kites. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. So, Ningguang organized a private meeting with Miss Charlotte to ask for her help in fostering cooperation with the right people. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would Guys, you stream need को to सारे add like कर something देना, साथ की mechanical? watching आ रही है, who are you? वही Well, तो मैं you पूछ रहा हूँ, actually guys. just answered your own चिल question, करना, Paimon. रोस्ट करना, साकी पर How high का and रोस्ट far a मत kite करना, can ठीक है? fly क्योंकि वो depends as much on the इसके weather बीच में नहीं है. conditions as on the skill और of the जो person मर्जी holding करो. the string. और इन सारे But स्ट्रीम as को soon as लाइक there's कर no दो. wind, you can 205 only flail सब हो about गया गाइस. helplessly आज like a 215 slow सब्स का stone टारगेट atop है out of water. एंड 25 लाइक्स का Experience टारगेट है. doesn't matter at मैं that इंसान point. हूँ. Exactly. I guess अब तुमको Liyue is now a आया nation क्या? ruled by humans गाइस after कोई all. सुनहरा को भी बुलाना It's स्ट्रीम पे. about time we had the power to make a kite fly, don't you think? साकी आप ना Plus, सवेरा the को easier टैग we करो can कि make सवेरा it to स्ट्रीम पे है. enjoy, the more people will लाइक want to वही टीम को ठीक participate. कर सकते हैं. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. हाँ We मैं didn't बाय want मैं it to बाय be मैं too बाय द much ना more expensive than a मैं traditional सकीरा kite. पीसी दी स्ट्रीम करने जा रहे हैं. Whoa! Turns out you ओ two and सकीरा Ningguang बस are playing with रोटी खा toys के. just as much हेलो as ना Paimon. सॉरी क्या कहते हैं छोले पाजी Toys? वेलकम टू दिस They're कौन सी वो not exactly स्कीरो toys. शैडो You डिवाइस see, Miss शैडो Kuching, डाइट ट्वाइस that does seem to be प्रतीक everyone's अंग्रेज first का reaction. 14 फाइन व्हाट अबाउट यू. Although kites are one of our most छोले time-honored cultural relics, outside of their use in certain जितनी भी मंडीर ceremonies, I बैठी है ना suppose ये they're सारे ना considered मेरी playthings एक more than मॉडरेटर है anything उस now. बेचारी की But to me, वो करने वाले there's so हैं much more than रोस्ट. that. आधी स्ट्रीम में हो क्या? हाँ Think for a आधी स्ट्रीम second में होएगा. about how वो तो खुद remarkable it कहता is कि that मैं a लाइक flimsy paper kite साकी का attached to a रोस्ट string करूंगा टका has the के. capacity to touch the sky. It is this light piece of paper that also carries the और weight of और Liyue's बताओ cultural छोले. traditions. छोले मेरे ना There's an old सब्स poem लाइक that goes, जल्दी बढ़ रहे हैं. अब "O तो डेली kite लाइक born of 6 paper, 7 6 flying 7 true 8 and 9 sound. बढ़ रहे हैं. A ठीक है. lone traveler wanders, एंड just व्यूज waiting भी to be found." मेरे को अब अच्छे आ रहे हैं 200 प्लस. पोकीदी तो आप आज मजे In ले the past, मतलब आज poets from देखना ठीक है. Liyue used मतलब kites मजे to लेना आज symbolize तो. a feeling of वैसे ही longing, नहीं. or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Guys, Well said, Miss Kuching. 9 keep watching. I've learned quite a bit Awesome. myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related स्ट्रीम to पे kites. रहना, For चैट एक्टिव example, रखना, whenever a kite तभी blew Genshin के away, ज्यादा people बंदे आएंगे would say स्ट्रीम it was पे. the ठीक है. Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? अबे More कल fun. आदि ने ही किया था तभी तो let me मेरी कल think. स्ट्रीम बंद पड़ गई Oh, थी. I दी suppose भाई we should first talk आदि about ने how किया kites था are कल. made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of ये your choice on आयाशा a कुमारी piece ना of paper, टिंकू है. paste it onto the frame, and टॉप tie वाला on a कब string. ऐड करोगे? Then, टॉप you look आवर towards वाला the sky नहीं and वो release मैं the ऐड नहीं कर kite to सकता. soar among the PS5 में हूँ ना clouds. तो वो मैं ऐड Some नहीं कर people write सकता. down certain सॉरी. names or desires on their kites. एंड Cut the string and let आयाशा them fly कुमारी तू free. ना पक्का टिंकू है. Others may तू place कहना क्या तू particular टिंकू है. thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings?
I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? The scissor-tailed swallow is the most classic design. It मेरे symbolizes मेरे good को fortune and लगता है joyful साकी क्रीम tidings. पे ही नहीं है. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for quite तो the टिंकू article ही on है. my hands. रोशनमैन वेलकम. आप टिंकू ही हो, ठीक है? स्ट्रीम को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर I'll देना. show Miss टिंकू Charlotte ये to my तू home ही for है a बेटे. little while. साकी ने शायद फिलहाल स्ट्रीम पे I almost आने दे forgot. उनको. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Oh, Paimon was on board the moment you said secret अबे prize. तो पीसी से या फोन से दोनों से I'm gonna आया look होएगा forward to टिंकू. seeing your performance. You bet. See you then. Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there? Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? Great. So it wasn't just Paimon. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. अबे तू रुक, साकी को आने तो दे. Oh. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the तू पक्का enlightening, टिंकू ही buddy. है, तू टिंकू ही है. तू कंफर्म है तो टिंकू ही है. You eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptis, Moon Carver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address... You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. भाई सारे जाने स्ट्रीम को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Huh. Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a Adepti. Preposterous! Utterly preposterous! Right. Tell us something that only भाई an Adeptus would रुको know. तो सही, उसको And आने it तो better दो. be some common knowledge that any person on the street could tell you. You may recall that in order to preserve the tranquility of one's mountain, one planted karst crawlers around Mount Hulao. In fact, the seeds are one of Streetward Rambler's cultivars. Among all the Adepti, her horticultural skill is preeminent.
The plant neither wilts nor withers, and its practical use is undeniable. Yet it does require quite the upkeep. After a while, one tires of the effort. Thus, one had no choice but to foray into town to inquire from Streetwood Rambler a gentler and more easily managed variety. On your way, you were accosted by a group of youths, and without revealing your true form, were unable to extricate yourself of their presence. If one's memory serves, Streetward Rambler had to personally come to your rescue. How did you come into possession of such knowledge? The young lass, Qiaoying, keeps no secrets from Cloud Retainer. Alas, one can only let bygones be bygones. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon's sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourself... You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Paimon's still curious about something. प्रतीक ही है क्योंकि तू पंजाबी में बोल रहा और प्रतीक ही पंजाबी में बोलता तू प्रतीक है ब्रो is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, भाई वो कहाँ से शायरी है किसी एंगल से शायरी नहीं है वो an account of the festivities in advance. Yet to this day she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. खेमा ये सारे आपको रोज कर रहे हैं ये यूजर ने देखो क्या बन ला के आए हैं. We had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's और इनमें से एक वो भी है आदित्य वो कहता था कि आज तो मैं खुद साकी को रोस्ट करूंगा लाइक वो कभी भूलेगी नहीं वो लड़की लाइक इतना रोस्ट करूंगा She holds the belief that her तो skill इनमें से and mechanics surpasses आदित्य भी है that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? चलो साथी मेरे पे ही जाते हैं मैं नहीं रह रहा स्ट्रीम पे आजकल रहूंगा अबे तेरे को तो मैं बोल भी नहीं रहा मैं तो साकी को कह रहा हूँ कि साकी प्रतीक को रोज मत करना और जिसको मर्जी पर रोज कर दो पर प्रतीक को मत करना मैं तो वैसा बोल रहा प्रतीक ये तो किसी को आज रोस्ट नहीं करने वाले वाह भाई गाली मत दे क्या कहते हैं ग्रेफन ये सब मत लिखिया मेरे को रोस्ट किया तो हाल के बाद देखिए इधर पहले ही बोल देता हूँ अबे यार हाय ट्रस्टी हाय तीर्थ वेलकम टू द स्ट्रीम कैसे हो मैं एकदम बढ़िया आप बताओ क्यों छोटी बच्ची डर गई ओले ओले साखी आदित्य देख रहे हो आदि को देखो आपसे छोटा है देख रहे हो Wow, these will come in handy.
ये क्या हो रहा है आज? ये क्या हो रहा है? छोटी बच्ची खुद ही बोलते मैं रोस्ट नहीं कर बढ़िया हूँ। भाई गाइस सारे स्ट्रीम को लाइक कर दो, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, स्ट्रीम का टारगेट है आज मतलब 25 लाइक्स का टारगेट है एंड 215 सब्स का टारगेट है एंड स्ट्रीम को सारे लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया। Another target tracked down by Outrider Amber. साखी ये वैसे आदि ने आपको धोखा दे दिया। ये छोटा बच्चा है और आपको ही रोस्ट कर रहा है। वाह, ये नहीं सोचा था आदि से। Is running a bit low. Bet you can't keep up with me. The waves are as calm as always. I'll race you there. I wonder what's going on up there. Hello, Saki. ये लड़की है कहाँ? कोई कुछ नहीं लेके आओ, मजा नहीं आ रहा। अबे वही तो करने पे लगा हूँ। ये सबको आप सबको तो रोस्ट करने लगे हैं। बहुत भी टकिया हो। भाई रुको, मेरे को हंसी आ रही है। मैं बंदा नहीं ढूंढ पा रहा ये किधर है। ये तो नहीं है, ठीक है। ये तो अलग है। टॉक टू एशू। चलो भाई, इस छोटी बच्ची के लिए मेरे पास टाइम है ना। जैसे भाई उसको रुलाना चाहते हो क्या? छोड़ो आज। उसका गिव अप है। छोड़ो मत रुला उसको। That's more like it. The sound of the ocean waves. आजकल के छोटे ये मत रुलाओ आज। वो सबसे माफी मांगती है। मत रुलाओ उसको आज, ठीक है? मत रुलाओ आज। साखी आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला लो ना। It's not giving up, I'm just हेलो टिंकू, कैसे हो टिंकू? साकी आप उसको बुला लो ना। आप अपने वो दोस्त को। लाइक वो तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। ब्लैकमेल करते वक्त उसको रुलानापन नहीं दिखता। हाँ साकी आप उसको बुला लो ना। विच वन? आपका भी बेस्ट फ्रेंड? आई मीन बुला उसको बुला लो। वो आपकी तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। फिर मैं भी 55+ ला दूंगा भाई। फिर से एकदम बढ़िया। लेकिन भाई किसी छोटी बस्ती को रोस्ट करने आया हूँ। भाई गाइस 10 की वॉचिंग आ रही है। नॉट ऑल माय फ्रेंड्स विल जस्ट रोस्ट मी इंस्टेड। नो साकी बुला के देख लो ना। जा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाऊं आपकी हेल्प करने के लिए। बताओ आप। मैं तो फिर गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दो सारे एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया, ठीक है? नो डू इट। नो ओके। नो इट्स ओके। ओके जैसा बोलो। फिर ट्रस्टी मैं भी बुलाऊंगा। नहीं बुला रहा मैं किसी को भाई। नो इट्स ओके ट्रस्टी, फिर मैं भी बुलाऊंगा।
बस I will have to leave in a while anyways. तो आप फिर स्ट्रीम पे नहीं आ रहे ना आज? लाइक इसके बाद? मतलब 12 बजे लग ही रहा था लाइक इंडियन टाइम में इंडियन टाइम में या दुबई के टाइम में छोटी बच्ची बुला रही है रोज उल्टा मेरे को करना को छोटी बच्ची डर गए क्या बुल्ले Get ready for the gliding champion of Mondstadt. यू हो जाए मतलब आप वही रात के 1 बजे आओगे सही है फिर भाई आज उसका गिव अप है वो रोज नहीं करना चाहती तो छोड़ो इस बात को चिल करो सारे यार 10 से सीधा 7 की वॉचिंग I won't let you down. Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Ooh! A scissor tail swallow! And a butterfly! And... oh! This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. रोशरमैन पर तू है कौन ये तो बता दे That's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Shenyun? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Gaming the guard you just mentioned? Well, yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Oh, wonderful. You will, of course, be compensated for your efforts. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume.
Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Bet you can't keep up with me. Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. I'm back. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation, and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect. Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Ilang Wharf. Oh, that must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. आयशा कुमारी, तू मेरे को पता चल गया तू है आदित्य. Kite-making materials. कि कल बोल रहा था आज रोज फिर करेंगे तो. I'm glad it wasn't too much trouble if I'm on. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. आज कोई रोज नहीं करता, छोड़ो यार. You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? So, you here for Lantern, right? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Ilang Wharf and have a look around. Perfect! We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise, you won't be disappointed. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends, too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard, after all. Will Rosterman to hack on? भाई मेरे से गलती होगी, मेरे को नहीं पता तू कौन है, ठीक है? सॉरी, गलती होगी मेरे से. भाई मैं नहीं जानता आप कौन हो, ठीक है, कोई ना.
मैं जानता ही नहीं आप कौन हो। Oh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. मेरे को क्या पता ये ट्रांसलेशन कौन है क्या? अबे मेरे को क्या पता ये कौन है? Wait, and get behind me. I'll handle this. अबे ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है? हाँ पता तू इंसान है, तू एलियन तो है नहीं। Mighty mythical beast! अबे मैं कहाँ कुछ बोल रहा है, ये रोज कर मैं नहीं कुछ बोल रहा, मैं तो उसको जानता तक नहीं है कौन। मैं तो जानता तक नहीं ये कौन है। Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders' camp. अबे मैं तेरी सारी चैट पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ी नहीं जा रही, हंसी नहीं आ रही है। It's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. मैं नहीं रोस्टिंग कर रहा, मेरा तो गिग गिव अप। Have you ever heard of wushu dancing? Really? Wushu dancing is famous in Shenyun Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or spread good fortune during the holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So it's not something I do full-time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday I stayed up all night playing cards. Oh. Let's go. The docks are just up ahead. Hi Jason, welcome to the stream, mate. How are you, man? Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so joining, stiff. And her stomach so empty. I'm good. What about you? I'm good, bro. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. चलो guys, अब मजाक ना करो, अब बाकी भी आ रहे हैं, ठीक है? And Emma, आप bye. Okay, Jason. See ya, man. Sorry, I got to. No, it's okay. I'm glad Would you like joined some my winter stream. melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jumps you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Warsu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. मैं पढ़ तो ली, जब वो जेसन आया मैंने पढ़ तो ली तेरी चैट रोस्टर. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there.
That close of a call, huh? I've been eating wintermelon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. उसके बाद ऐसा नहीं बोलना वो वाली चैट यार मेरे पे कुछ भी मत बोल आयाशा तेरा अब तो कोई मैसेज नहीं आया योजी तू मैसेज करता रह listening to your chitter chatter. ऐसा नहीं बोला तो कैसा बोलूं कि ऐसा नहीं बोला तो कैसे बोलूं लोगों को ब्लैकमेल करके क्या ये भी ऐसा क्यों बोलते हैं उस टाइम लगा जब ये ब्लैकमेल करते हैं उस टाइम क्यों नहीं बोलते हो ओ Don't forget your things and watch your step as you get off the raft or you're in for a swim. Hello Thakur Mishra well Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. भाई स्ट्रीम को लाइक भी कर देना स्ट्रीम पे आए हो ना तो स्ट्रीम को लाइक भी जरूर कर देना ठीक है Hey, slow down. I'm begging you. What is it? मेरे को पता तू इंसान है जानवर तो तू है नहीं तू है ही इंसान How should I put it? जानवर होता जानवर लिख थोड़ा पाता Do you see that group of people over there? मेरे को नहीं पता ये कौन है ये ऐसा ही है Those are my relatives. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. आज के लिए बस हो गया अब मत करो यार आज के लिए बस हो गया अब मत करो अब इसने वो ब्लैक अबे छोड़ यार तू जो भी है Let's go straight. Slow and steady wins the race. इसको लड़की की जगह उसके दोस्त को भूल गया क्या बोले आयशा साकिया फ्री हो क्या थोड़ी देर के लिए Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. शेर को कहते हैं और बैगन पे हाँ सवेरा की हाल चाल मैं आपको याद कर रहा था भाई मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ सवेरा आप बोलना टिंकू सवेरा को क्या बोलना चाहता था छोटू हवाले की छोटी है ब्लैकमेल वाली बात बोल के खबारा खेमा सवेरा को बताना टिंकू इनको क्या बोलना चाहता है अब आप टिंकू को ब्लैकमेल करो क्योंकि ब्लैकमेल खुद भी यहाँ आ गया है तो टिंकू को ब्लैकमेल करो सवेरा शुरू हो जाओ जो आप मतलब ताकि जो आपने वो टिंकू बार सवेरा को बताना ना शुरू हो जाओ सवेरा स्ट्रीम पे ही है ट्रस्टी गेम करो रुको मैं करता हूँ सवेरा आपको ना खैमा ने कुछ बताना है टिंकू के बारे So I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway.
So like Hey, बोलो we're बोलो already here, देख aren't रहे we? हो guys No harm in taking a load off for a लड़कियां bit. से ऐसी Plus, I know the काटती Secure है Transport Agency has हाँ some बोलो great formula tea बोलो stuff around here कैम somewhere. जल्दी बताओ सवेरा को I promise सवेरा you, वेलकम टू one sip स्ट्रीम and you'll be hooked. कैसे हो Anyway, आप you just sit down and relax, Uncle Jergoy. Who would I be if I just sat अरे here and भाई let you ये go सब through all मत this करो trouble? यार क्या Leave this to me. हेलो एवरीवन I have to be up and about क्या to drop these बताना है goods off कुछ anyway. पागल के बारे में What's a little extra time on my Tinku has feet? very interesting thoughts about You aren't you too picky, right, Traveler? खेमा I know बताओ Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the सवेरा tea too ब्लैकमेल long. करने की And I'll add गलत some मत dim sum करना pastries on सवेरा the side. ब्लैकमेल करने की गलती मत करना वरना हो जाएगा अच्छा खासा रोस्ट बाद में काटने को देता हूँ क्यों हूँ लड़कों टिंकू डू How long have you two known तो Gami? सवेरा Saki wants to say We just kind of tagged along on his trip to Yuan साकी Wharf. बोल दो सवेरा को स्ट्रीम पे ही है बोल दो सवेरा को Friends, you know, just like that. I have a proof That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. A while ago, one of our अबे guards had to जल्दी take बता off दे work. Said साकी his बता joints दे were hurting due to the rain. साकी बता दे Gami personally went सवेरा all the स्ट्रीम पे way ही to है Bubu फिलहाल Pharmacy to तेरे get पास some टिंकू medicine का for him मेन from पॉइंट Dr. है Baiju, then बता traveled दे through the बता night दे to deliver सवेरा it ही back to him. सवेरा है कौन बे Young man has such सवेरा a एक good head on लड़की his है shoulders. वो How can anyone not पाकिस्तान love से him? है I mean, सवेरा का he wants to there is his dad, but, well, ask anyone else. Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jergoy? साकी को Should I go रोस्ट ahead and किया deliver तो it instead? ट्रस्टी को आ गया गुस्सा Feels like we've अब troubled you ट्रस्टी enough तो already. अब It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Right. Oh, by the way, here, have some tea. देख लिया सवेरा कैमा ने आपने कैमा ने क्या लिखा हेलो एक्मोनिक ब्रो How about we grab some dim sum from Shenyun kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. सवेरा मैंने साकी को रोस्ट किया ट्रस्टी thing between me and my family, साकी का तुम ध्यान it's मत a दो long भाई story. सर It संदूक might take सिर्फ some time to काम tell. आते हैं बंदूक Good. Paimon never says no to free food. भाई करो चैट एंड एक्मोनिक आई एम गुड हाँ मैं अच्छा हूँ एक्मोनिक स्ट्रीम पे आया हो ना तो स्ट्रीम को लाइक कर देना ठीक है Make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. सवेरा की मैं बोलो Is Gamin's family situation really that complicated? अबे ये क्या है He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. साकी अब भी देखो कैसे करता है Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. ऐसी लाइन से रोज करूंगा कि Make चले जाओगे डिप्रेशन में हमेशा के लिए It can say, we provide aid in spades. Couldn't hurt to advertise our services, right? Dude, bro, मजा I आएगा can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? भाई सही है Seriously? सवेरा आपका डिनर हुआ क्या But if you're going to get us something, she'd much rather have winter melon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. टिंको ने भी इसी क्यों नहीं कर दिया मेरा Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. टिंकू रोस्टिंग ही चल दी सवेरा ने तो कुछ बोला भी नहीं रोस्टमैन ट्राई मी ब्रो भाई करो तो जरा देखो तो कैसा रोस्ट सवेरा ऊपर की तरफ देखो मैंने साथी को इतना रोस्ट किया कि ट्रस्टी को गुस्सा आ गया
सब चुप The way हो you गए अब speak, क्या one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do भाई some हम shopping, तुम रोज aren't कर रहे हैं यार And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment? Or perhaps even fall to petty टिंकू को सॉरी self-love or कह दो ये ज्यादा बुरा मान गया It's not that we think those things सब चुप हो गए That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us. मजाक के लिए लिमिट है सारी लिमिट तुम सब लोग क्यों क्रॉस कर रहे हो चलो हम सॉरी मांग लेते हैं साखी I'm sorry too देखो I'm sorry too साखी ने सॉरी मांग ली मैंने भी सॉरी मांगी अब कौन टिंकू कौन है टिंकू कौन है क्या वट्टा ये बच्चे जैसे क्यों लड़ रहे हो हम लड़ नहीं रहे हम time has क्या quite लोग flown हो since one's arrival in तो Liyue कर Harbor. अबे तुम क्या लोग हो One have अब तो forgotten कर about रहे those मेरे two से old बात fossils. भाई क्या मैंने भी सॉरी भाई साथ ने भी सॉरी मांग ली मैंने भी सॉरी मांग ली मजाक में कर रहे आई वाज जस्ट किडिंग Given that one has ventured all this डोंट way टेक to इट Yilong सीरियसली Wharf, सॉरी कहने से would कुछ be नहीं more होता सॉरी बोलने से कुछ नहीं a होता great thought has illuminated one's तुमने के mind बाद once कभी again. नहीं कैसी One is लिमिट reminded that कोई certain purchases have yet to be made. कैसी लिमिट कोई Perhaps you two तोड़ could wait here रियल whilst में one है performs this आप task. मेरा ले लेते It'll be but a नहीं भाई moment. अब कुछ नहीं हो सकता सॉरी सॉरी ब्रो भाई क्या हो गया तो स्वेरा ने कुछ बोला थोड़ा है तेरे को टिंकू Oh, that woman really just does whatever she wants. Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Just... स्वेरा आप स्ट्रीम पे हो क्या ये बताना Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly सब from बाएं Qiaoying village. अपने थोड़े थोड़े Might I recommend the क्या Sunglove करते variety? रहते हैं It's one of our टिंकू specialties. डोंट बी सैड आई नो दे आर Now, किडिंग that यू sounds promising. क्योंकि एक पागल इंसान One को will bring परेशान some करना back for those old fossils, अच्छी बात and है all will be well. अब स्वेरा 2 boxes बात will सुनो do. स्वेरा Wonderful. एक काम By the way, we're actually running a करोगे special मेरे lantern rite promotion. कहने Buy पे 3 boxes, get टिंकू 10% को off. 4 सॉरी बोल boxes दो will net you 20% रिक्वेस्ट है off. आप टिंकू को सॉरी बोल दो मेरे कहने पे कोई रोस्ट मत करना बस सॉरी लिख दो टिंकू को Merchant strikes a fair आई bargain. गॉट किल One might as योर well give some to Morax and Ping too. Then 4 shall suffice. तुम लोगों I की see. मजाक Are you intending to टिंकू give these चल as भाई gifts? ये लोग बहुत If so, बुरे हैं perhaps I कि can interest you in these को रोस्ट क्या exquisite कर gift दिया sets. गुस्सा होके Buy ऐसे कर 10, रहे get half off. Look चलो at the कोई तो magnificent चश्मे design, and the red समझ ribbon गया gives quite थैंक the गॉड festive flair, don't you think? Such a ये gift would कौन be sure to लेके आए impress any यूसन lucky साकी friend आई or गोइंग family किल member. योर मतलब भाई तेरा मैसेज भी नहीं आया Seems rather excessive. But if one अब एक factors ग्लासेस in the होती हैं conqueror of अगर demons अब and किसी one's ने भी इस बारे में disciples, मजाक किया एक को मैं खुद देख लूंगा टिंकू अब एक 10, ग्लासेस nice round भाई number, don't you मेरा think? वीसी Of तो course ज्वाइन you कर ले do. टिंकू I'll even shave a little वीसी extra जो off लीव the के price वीसी for तो you. ज्वाइन कर ले भाई that is agreeable. लाइक मेरे One 50 will, मेंबर्स हुए थे कल ही तो I तू will लीव have these किया ज्वाइन boxed तो up कर ले then. Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. I'm a toy merchant from ज्वाइन कर ले Fontaine. You'll get nothing but the अब तो स्वेरा ने finest and most माफी intricate मांग clockwork ली toys साकी ने माफी Mora मांग ली can buy मैंने भी here. माफी Each मांग one ली sure to be a इना मीना source of डीगा ये endless सब amusement. है मीन्स बहुत साफ दिल का Perhaps you could तो enlighten तो me. ज्वाइन कर ले then. मेरा When स्वेरा should इनको said बोल दो amusement ये be वीसी ज्वाइन कर ले derived? मेरा Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. अब मैं If जा you रहा could हूँ wait इंटरव्यू just a राउंड मेरे moment, को I can bring घंटा one out कोई and give you a ब्लैकमेल का demonstration. धमकी में मुंह में फोड़ दूंगा उस टाइम लॉल भाई
There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Many watchful eyes surround this place. Goodbye. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, thank you. a child's plaything no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study in secret. अब गाँव में खेला मेरे जाएगा जो इसकी कोई भी रोज करेगा तो अब है Oh, Shenyun, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. And you two, are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. भाई तेरी तो चैट ही नहीं आ रही ताकि आई गोना किल योर वो तो भाई तेरी भाई बंदे तेरी चैट ही नहीं आ रही नाम बदल गया. You are also planning to participate in the kite flying competition then? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yaya. अगर आप जाओ मतलब टिंकू को बोल दो कि मेरा भी ज्वाइन कर ले और पागल मत बोलो वो टिंकू है ठीक है पागल मत बोलो उसको You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. It is built with a series of intersecting rods. Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about दुबई it, में दी नन है और इंडिया में कालू ये गेम खेलना छोड़ दे और साक्षी जाके किचन संभालो ओए होए क्या रोस्ट मारा भाई एंड एक अमीर इंसान भी कभी कभी पुअर लगता है एक अमीर इंसान कभी कभी एंड साक्षी कभी पुअर लगता है तुम चाहे कितना भी मेकअप कर लो साक्षी हमेशा सूरी लगती Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely मैं तो on पागल another? ही बोलूंगी पर वो चश्मिश क्यों बोलता है मैं तो पागल ही बोलूंगी ना ठीक है सवेरा मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको टिंकू पागल नहीं बोलेगा ठीक है लाइक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि टिंकू आपको कभी पागल नहीं बोलेगा मतलब ना पागल बोलेगा ना चश्मिश बोलेगा ठीक है तो आप भी उसको पागल मत बोलना ठीक है टिंकू आपको आज के बाद ना चश्मिश बोलेगा ना पागल बोलेगा ट्रस्टी उस दिन तो चुप रह गया जब इसने ब्लैक मैन वाली बात बोली ठीक है भाई मैंने क्या बोल दिया अब कौन है वे पागल ये इनका थोड़ा अलग ही सीन है मतलब ठाकुर तो लाइक पागल कौन है पागल कोई नहीं ये बस मस्ती मस्ती में बोलते हैं सवेरा मैं आप देखते हैं प्लीज उसको माफ कर दो नहीं वो आपको आगे से चश्मिश नहीं बोलेगा All the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. आपको वो चश्मिश नहीं बोलेगा सवेरा
इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ. A crude piece of mortal machinery? I bet she just can't wait to take it apart and see how it's मस्ती made. है तो झगड़ा ये क्यों कर रहे हो? अबे झड़ गए नहीं, हम रोज कर रहे हैं. वो एकदम मैं तो चश्मिश ही बोलूँगा. टिंकू तो चश्मिश नहीं बोलेगा. तेरे को नहीं सवेरा के नहीं. तेरे को मेरी कसम तू चश्मिश नहीं बोलेगा इसको. When it comes to an elder, right? और टिंकू मेरा वीसी तो ज्वाइन कर ले भाई. एक मिनट ठाकुर. अबे मेरे को गेम खेलने दो. चैट कुछ ज्यादा ही आ रहा है. कहानी वाली शक्ल तुम्हारी चोर जैसी और हरकत से भिखारी. भाई ऐसा मत बोल. साकी आई गोना किल यू. ये मत बोल भाई. ये मत बोल. ठीक है. मतलब ये बुखारी बुफुरी वाले वर्ड्स ना बोल. रिक्वेस्ट है. ठीक है. ओए कौन हो तुम? ठाकुर झड़गा कुछ फालतू का, इसलिए अपने स्मार्ट समझो घंटा करते हैं. मैं भी जा रहा डीसी से बोलने. ब्लैकमेल करके जो करना है कर ले. मैं नहीं डरता. चैट में चश्मेश भाई ऐसा क्या बात है जी से ब्लैकमेल हो जाए हो? भी ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. टिंकू मेरा वीसी तो ज्वाइन कर ले ब्रो. मेरे से क्यों नाराजगी? आज से बात है ना. हमेशा मेरे बीपी तुम्हें है क्या? अबे अब नहीं करूंगा. ठीक है. सॉरी मांग ली. साकी ने सॉरी मांग ली तो वो नहीं करेगी ना. कोई ना भाई. इग्नोर करने का भी सुनो. जस्ट इग्नोर जो तुम्हें पसंद नहीं है. ठाकुर कहना क्या चाहते हो भाई? I'm sorry again too. अब देखो यार साक्षी भी माफी मांग रही है. सॉरी तो बोल रहा है ना. माफ कर दो ना. मैं तो प्रतीक है भाई. जो करने में किसी को भी मजाक की एक लिमिट होती है. कितनी बार समझा चुका हूँ. अबे रोस्टिंग बैटल चल रहा था. अब हो गया. अब बात. अबे इतने मैसेज क्यों भेज रहे हो? मेरे को टीवी पे कुछ दिख ही नहीं रहा. You're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. तेरे को भी पता है साकी के मगरमच्छ के आंसू है. टिंकू आदित्य बाहर कुछ नहीं है. लेकिन एक बार जो इंसान बोले ब्लैकमेल करूंगा मेरे को 5 दिन दो. ये आज मजाक कल हो सकता है. एक बार भरोसा करो किसी पे. मतलब जस्ट इग्नोर बैटिंग. मजाक की एक लिमिट होती है. कितनी बार समझा चुका हूँ. सॉरी टिंकू. सॉरी तो बोल रहा हूँ. माफ कर ना. एटमॉनिक तो पूरे मजे ले रहा है. एटमॉनिक मेरी स्ट्रीम को लाइक भी कर दे ब्रो. Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat. If it's not enough, we can always order more. Sakhi, and there's tea soy coming as well. और इनमें कैरेक्टर कैसे निकालूं वो बताना आप. What about you, traveler? The 9th Is the food to your liking? Want some more? Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full, and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks.
fool. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. मगरमच्छ के आंसू पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। साखी मगरमच्छ के आंसू भरोसा नहीं किया जा सकता। साखी मगरमच्छ के आंसू ब्लैकमेल करके दिखा, वक्त नहीं दिखा, तेरे को भी पता है। तू ठाकुर भाई, मेरी माफी में कुछ नहीं होता जब तक ऊपर वाले ने माफ करा। भाई मैं तो एक नॉर्मल से इंसान हूँ। मैंने क्या खा? बार DPS पागल कौन है? Are you confusing me with Xingqiu? हाँ ना प्रतीक, मैं भी बस ऐसे। You know what? I will just never mention blackmail again. Bye. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. मैं कितना गुस्सा हूँ, मैं हूँ तेरे को, तुम्हें बाद में देखूंगा ट्रस्टी। Oh, you truly are a man. Sorry टिंकू यार, मैंने झूठ मगरमच्छ के आंसू निकलने वाली। Okay, enough with the teasing. कैमा? Sorry to burst your bubble, साथी फ्री होके ना you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? गलती करके सॉरी बोल It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun commerce. उस दिन ब्लैकमेल वाली बात में मजाक में He always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. बहुत दिन से हंस के छोड़ दिया। हाँ ना भाई प्रतीक, ब्लैकमेल तो इन दोनों का हुआ था। मेरे को बीच में क्यों लेके आए? अब छोड़ो यार, चिल करो अब। Interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. Aditya? And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Aditya? Still, Sakhi? change तुम takes दोनों time. ना VC है ना? Gotta take it slowly, you know? मैं जॉनी को बुलाता हूँ, ठीक है? ये कह रहे हो ना कि मैंने बनाया, जॉनी ने बनाया था, उसको पूछ ले, भाई वो बेस्ट फ्रेंड है. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. भाई तो क्या हो गया? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Shenyun that we would go to her kite making workshop. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Shenyun. That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an Adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dice. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that तुम लोगों को problem है ना? ये लो. It's one thing to use it on cloth, but
Applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. तुम लोग ना मेरा It'd be such सर्वर a ही shame लीव if कर दो, everyone worked ठीक so है? hard on their kites only for them to इतना get वो है. ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Shenyun wants to use those dies on a kite, the formula will need to be changed. Great, the more the merrier. एक मिनट दो, ठीक है? हटा दिया, ठीक है? अब आ जाओ. आ जाओ, हटा दिया है. अबे एडमिन से भी हटा दिया है, सबसे हटा दिया है. अब तो वीसी आ जा. हटा दिया है. भाई मैं एडमिन से हटा रहा था, हटा दिया है. अब वीसी ज्वाइन कर लो. Maybe I wasn't meant for this world. चैट पढ़ ले, मेरी कोई मजाक में नहीं हूँ अभी, और एडमिन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं. बात सुनो साखी, मैं कसम खाता हूँ साखी ना कभी भी ब्लैकमेलिंग वाला वर्ड यूज नहीं करेगी. अगर किया ना तो मेरे को मेरे सर्वर से किक कर देना, बात ही खत्म. Hello, friends. ठीक है, इतना ही है. वो कुछ नहीं बोलेगी. Come you. Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulating effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. चल आजा, सॉरी भाई, आजा. ठीक है, आजा. बीसी आ जाओ तुम तीनों. Apologies in advance. Wait, Shenhe? Not there! चल टिंकू, बात सुन. टिंकू, लास्ट टाइम मैं अगर कुछ हुआ ना भाई तू मेरे को ना ब्लॉक कर देना, ठीक है? बात ही खत्म. She's awake. अब छोड़ यार, आजा अब. Do you need some water or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? मतलब duo VC Trusty That's what the expression means exactly. I feel a bit better now. मैं सीरियस हूँ ब्रो. अब मजाक मत कर. अब सुन, अब तू सुन लेगा. मैं सीरियस हूँ. Did you not sleep last night? ठीक है. That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Qiaoying.
It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Shenyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too! I want to participate in the kite flying competition with my best friend! Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Shenyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? So delicious. Paimon's life is complete! It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Paimon knew she could count on you, Traveler! One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friend. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool! Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start,
right now! Hey, Gaming! Want to team up? Huh? But I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? What do you think, Shiyu? Is there a particular design you want? I want a swanee! That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. And welcome to the stream. Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. हो गया था रुको कुछ नहीं हुआ हम चिल कर रहे हैं ठीक है कुछ नहीं क्वीन Then I'll apply the oil to your forehead next time. ठीक है मैं चैट पढ़ता हूँ मैं कॉल पे हूँ ठीक है मैं पढ़ता हूँ चैट एक मिनट में Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. आप कल स्ट्रीम पे नहीं आए कल ही मेरे 200 लाइक क्या सब जूम हुए हैं अरे ये इंग्लिश साखिया स्ट्रीम पे हो क्या We should get started on our kite now. Let's go. And you how are you man आप स्ट्रीम पे नहीं आए रुको मैं स्ट्रीम पढ़ता हूँ First, we have to decide on the shape. Everything is all right. You guys. अरे ये इंग्लिश क्या हो गया क्वीन लाइक स्ट्रीम पे हिंदी बोलते हैं कई इंग्लिश बोलते हैं क्वीन अबे नो मेरी चैट नहीं दिख रही तुमको दिख रही है चैट Make sure you never get lost on your travels and always find मैं the कल tastiest था बस food and बैकग्राउंड funnest में things चल to रही do wherever you थी और go. क्यों मैंने वो डेजर्ट वाला एरिया 100% कर लिया तो ना आज ये इवेंट खत्म होने वाला है तो मैं ये इवेंट आज कर रहा हूँ क्योंकि कल शायद कोई न्यू इवेंट आएगा लाइक 4 घंटे का इवेंट है जितना मैंने सोचा है ठीक है एंड लाइक मैं 2-3 बजे तक स्ट्रीम करूंगा तो आज किसी ने वीकली बॉस करने हैं लाइक रात को 1:30 बजे आज संडे है ना तो आज रिफ्रेश भी होएगा मालवा कौन हो आप सॉरी पहचान ना नहीं भाई आपको ये वो है क्वीन क्वीन ये वो है प्रॉस्पेरिटी हाँ नया रीजन आएगा हाँ मैं उसके लिए एक्सेप्ट भाई 13 की वॉचिंग आ रही है थैंक यू एवरीवन मैं आ जाता हूँ फार्म कर रहा हूँ ओके टू आप आराम से एक जैनक बीस्ट भी है वो भी थोड़ा है कौन ट्रस्टर से मैं नहीं जानती इसको हाँ मजाक कर रहे हो क्वीन रुको मैं साखी को भी बुलाता हूँ एक मिनट इनको साखी को बुला लूं All right, gather around everyone. Oh, Shenyun's calling us.
अरे सच में नहीं जानती मालवा को। कौन है ये? फ्रॉस्ट प्रतीक है वे वी से डिस्कॉर्ड को। आदित्य मत मजाक कर यार अब। Ganyu and Shenhe made a scissor tail swallow. It's so pretty. And like कर देना स्ट्रीम को। The coloring Queen makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. मालवा है मैं भी If you सीरियस look closely, there are a few spots where the colors go outside the line. Sorry guys, थोड़ा ना जुकाम लगा है। Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, Thank you, but I Queen. simply could not recall the coloring of Thank any you so bird. much. And by the way, आज ये आपको गेम कैसी लग रही है? Or should I say that I'm too familiar with her crane form? ये like आप फोन में भी खेल सकते हो, पर फोन में ये 35 GB की है ना, true, like 35 या 38 GB की। Oh, well now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. 1 GB You की are है most filial, Shenhe. Queen, ये गेम One is फोन में। flattered by the likeness. The swanee that Qiaoying and Shenyun made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. इस पे भी ना एक लड़की है What about जिसको your like traveler? मॉमी करके बुलाते हैं। रुको मैं दिखाता हूँ वो कौन है। लाइक मैं दिखाता हूँ एक रेडन है, ठीक है, और उसका इस गेम में अलग ही फैन बेस है क्योंकि वो स्वॉर्ड लाइक वहां से निकालते, मैं क्या ही बोलूं। और उसका जो फैन बेस है ना इस गेम में लाइक मॉमी करके बुलाते हैं। भाई वो तो मॉमी शोगन है, मॉमी शोगन है, ऐसे करके कुछ नाम है उसका, लाइक बुलाते हैं उसको। Oh. टिंकू मेरा वीसी ज्वाइन करना। Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? यहाँ भी सीन हो do so by making टिंकू use वीसी आ of जल्दी this मेरे। crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer! Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. There's wind up ahead. Looks like we can glide over. गाइस न्यू मेल आया है, ठीक है, आज देखते हैं क्या मिला। चलो देखो क्या मिला। ट्रू लाइक जो जेंशिन की स्ट्रीम देखते देखो, एक पुल मिली। फाइट का क्या हुआ? लोग भूल गए मेरे को। चैट वो वीसी आ, टिंकू जल्दी आ वीसी। हाँ खोल रहा हूँ। ट्रू ओके ट्रू। इधर भी सीली है क्या? रुको सीली मेल ये तो कर ही देते। और 2 मेल बाकी हैं शायद। नहीं ये 3rd मेल है। ट्रू दिस वन इज 3rd मेल। वो डीसी टाइप करो और वो लिंक आ जाएगा। टिंकू जल्दी आ मेरे वहां डीसी पे। नहीं बच गया, लगा था गया। 3 या 5। हाँ ये 3rd वाला है। रुको यार टेलीपोर्ट ही करता हूँ। क्वीन और ये गेम का सारा मैप है। लाइक जब गेम आई थी ना तब इसका मैप यहाँ तक था, अब सारा आके यहाँ तक हो गया है। लाइक ये सारा मैप है इस गेम का, ये जितना भी है ये सारा मैप है इसका। Get ready
for the gliding champion of Mondstadt! This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault? One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an Adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shenyun. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You? Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? Oh, all this flying from place to place is wearing Paimon out.
They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shuyu tired themselves out playing with their kites. Gaming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gaming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Propagate! I'll keep this close. I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? Huh? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both! Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less.
What colors have you been partial to lately, Shenyun and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. For this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Shenyun! This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet! Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? What strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Shenyun? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Minogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Minogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Minogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Minogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps.
one fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. It's time to carry out the plan! Let's go find Gaming! Hope everything goes well. Okay, true. Okay. साकी स्क्रीन पे हो क्या? Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. Alright, I've got the time. Where are the goods? It's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Qiaoying village to Liyue Harbor. A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Alright, don't work too hard now, Longzhou. We'll set off then. You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you.
Dad? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself, at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Paimon. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But, Gaming, If he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush.
all is going to plan. Okay, we should be good to stop here. Yongli? Oh no, what is he doing here? Good sir, please, listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Bandits? Acting in broad daylight? Oh. Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Wushu dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Wushu dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. One's not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker, yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on Wushu dancing. It made me happy. But I was also worried.
When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushu dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. Guys, मैं ना सबकी चैट पढ़ता हूँ. मेरे फोन की बैटरी थी पता नहीं 15% बैटरी थी. Things change so quickly. मैं पढ़ता हूँ. Children grow up in quite the same way, do they not? Kaptan, day after day, Odin, year after year. Welcome to stream. Sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Huh? Oh, okay. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So, that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance.
People with that level of skill would have gone about things differently from the start. Hello, Rumi. Like sneaking up on us Welcome while to we were the stream. distracted. Unless, How of are course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me. Rumi, if you are new to my channel, please subscribe my channel, please. I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show him what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Thanks, was Rumi. talking things through Thank with him, you. and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Rumi, do you have Discord? It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business Rumi, to which attend country to. are you from? Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, alright? Oh, you are from Spain? Thanks for helping us talk Nice. things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Xiao! You're here too? I've been here the whole time? A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects.
It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy... What is it, sesame oil or something? Guys, 5 minutes दो मैं chat पढ़ता हूँ, ठीक है? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Qiaoying, perhaps. What do you think, Xiao? I've only met Director Who a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Who. I'll leave these 2 kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was, awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like Xiao lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogias was the only yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. I should go inform Director Who of our findings. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Qiaoying village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. बंदीक मेरा VC और Discord join करना. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey,
Let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Shenyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Shenyun and Shenhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way? If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Shenyun's plan not work after all? Hey, you two!
Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers, too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course! Please follow me. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontainians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose Mora on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. Thanks, Rumi. Let's get up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite.
Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. Phew, it's done. Let's get down to business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Chi-Chi, we're almost there. Okay. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever! Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that? Have I taken that many pictures already? I need to load more film.
Wait. The wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Gaming's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in! You saw that, right, Traveler? Let's go find him! Oh! He's over there! Talking to his dad! I think I'll head off now, if that's okay? Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon.
That's quite the smile you've got there, Gaming. Really? It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie Shenyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Qiaoying village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look? The mountain air is so refreshing! It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired! Cream! Gummies! Fuel fruit! Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue sky! Right? So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me, Happy Lantern Rite! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite to you too! Wait, if you're here for Lantern Rite, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia?
Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Qiaoying village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought... No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. What? Nervalet was here too? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Nervalet is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontanians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Wriothesley, and now I have to buy him something. It was just a spur-of-the-moment sort of bet. Wriothesley gets really invested in that sort of thing.
but he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalette even mentioned it earlier. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right, Hu-Tao! A few days ago, we heard that a friend was going to be in Qiaoying village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear, we've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hu-Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Qiaoying village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later. गाइज अब चैट कर लो. अब मैं चैट कर सकता हूँ, तो चैट को एक्टिव रख लो अब सारे. हेलो कोई चैट पे है क्या? चैट को एक्टिव रख लो गाइस. Qiaoying village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu-Tao? Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Qiaoying village. Oh, or maybe Hu-Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Alright, no time to waste. Let's go see who's right. Good afternoon, Hu-Tao, Zhongli, and Farina! Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? Looks like someone's learned a thing or two from Zhongli. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, Traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. It appears you have been to Fontaine, then. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go,
It's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Oh, does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao... Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yep. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. Ha! You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, traveler. How about this? You buy Paimon a bowl, and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum, after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. Hello, Genshin. In fact, I still feel Eva. the need to sleep with the Welcome light to on the even stream. now. I was so sorry. Anyway, that's never. not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters.
Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Wangxiang Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Genshin Eva, if you're new to my channel, please subscribe it. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yep, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend... What about him? He doesn't get out much, does he? Ah, no wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so? Hmm? To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the Traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. He's got more friends than he knows what to do with. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Neuvillette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Yeah, sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do.
If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hu Tao. Oh? Traveler, Miss Farina, those two individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Clarand. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Oh, Genshin, Eva, please subscribe my channel. No apologies necessary. Any friend of the Traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina? Oh, yes? When are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Ooh. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clarand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, subscribe my channel. And get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Qiaoying village is an exemplary choice. Only the best. And I've learned a lot, too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum? Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious, Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me.
A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Chlorand is the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Shenyun. Chlorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can use, I think. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Oh, actually... Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Chlorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Chlorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the... But we don't know exactly when he'll show up. Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Neuvillette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Qiaoying village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Qiaoying village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Chlorand.
Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. क्यों एवा को बोलना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे लिखना चैट पे. Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. That explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Clarence some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. So that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the Fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Shenyun has collected. That sounds good to me. So that's what you were doing in Qiaoying village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once.
refreshing. My spontaneous outings seem to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Really? You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does, in part, originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Hello guys, I'm back. हाँ, अब मैं चैट पढ़ूंगा सबकी।
एंड गाइस आदि स्ट्रीम पे हो क्या? आई एम बैक। हाँ हाँ, आदि स्ट्रीम पे हो क्या? एक काम करोगे आप, चेक करना कि ये एक्टमोनिक वीसी में है या लीव कर गया। एक्टमोनिक लाइक डी 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 डीसी में है एक्टमोनिक। उसने भी लीव की क्या? वो एक्टमोनिक ने? डब्बा हटा दो। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। एंड्रू थैंक यू यार। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई स्ट्रीम पे न्यू आता है ना, तो बोल दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक अगर कोई न्यू बंदा देखते हो तो बोल दिया करो। हाँ हाँ टिंकू, बोलो बोलो। अ, 3 बजे। हाँ वो तो पता है, वो तो पता है। काम कर टिंकू, मैं डीसी जाता हूँ और कंट्रोलर से बात कर लेता हूँ। ठीक ठीक है। वो उस दिन एक जेसन आया था, वो नहीं नहीं नहीं, उसने तो सब्सक्राइब किया क्यों? वो तब एक्टमोनिक ने किया था, ठीक है। तो आज 206 हुए थे, तो फिर से 205 हो गए हैं। लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा होता है ना कि 500। टिंकू बात सुन, जितनी भी आईडीज है ना भाई, सब्सक्राइब ही कर दे। सब्स ही बढ़ाने हैं, सब्सक्राइब कर दे ब्रो। हाँ लाइक मैं वो रिफ्रेश करता रहता हूँ ना, तो आज 203 थे, तो 206 हुए, तो आज फिर से 205 हो गए। लाइक ये बाय द वे कैसे करूं? मैं फिर ज्वाइन करूं प्ले स्टेशन के वो वहां से। नहीं रीसेट। हाँ अब बताओ कैसे करूं?
पहले पुश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एक मिनट। ओके 1 मिनट। ओह नेक्स्ट पेज, ठीक है। गलत हो गया थोड़ा सा। हेलो ट्रू भाई, वर्ल्ड ज्वाइन कर ले यार। एक बॉस मारना है। जूम भाई, अगर आप स्ट्रीम पे न्यू हो तो स्ट्रीम को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज। हाँ थोड़ी देर में। क्या कहते हैं, रुको यार। जूम भाई, स्ट्रीम पे न्यू हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके ओके, क्या कहते हैं, ओके ट्रू भाई। क्या है सब्सक्राइब लाइव, थैंक यू भाई, थैंक यू। इस पे साथ में हो जाना। बाय द वे, ये अब मैं कैसे करूं? ठीक है। कोई बताना। तो लाइक पहले कैसे करना है? यू ब्लॉक द पाथ। रुको, अब तो कैसे करना है पहले? एंड जूम भाई, स्ट्रीम को लाइक भी कर देना, ठीक है? आज 25 लाइक का टारगेट है, तो स्ट्रीम को लाइक भी कर देना। 2 नंबर पैच को पहुंचाना है, मतलब उस जगह पे।
फर्स्ट मूव ओके 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 समझ गया एक मिनट ओके एंड ओके भाई थैंक यू अरे ट्रस्टी भाई कर दिया मैंने देख रहा हूँ 3 वीक से कोई ना ये ट्रू ने बताया नहीं मैं तो आपके स्ट्रीम पे अभी देख रहा हूँ गाइस अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज शेयर कर देना क्योंकि हम 500 सब्सक्राइब बहुत बात सुनो पता क्या है मेरे ना लाइक मौज को छोड़ के मेरे ना 3 हेल्पर हैं जो लाइक मेरी मदद कर मतलब 2 हैं मतलब 3 है एक ईशू भाई है लाइक जब भी स्ट्रीम देखते हैं मैं बुलाता हूँ वो आते हैं एक अबीर है और एक ट्रू है ठीक है मैं चैट ओह ठीक है तो ना एक ट्रू है लाइक ये मेरी हेल्प कर देते हैं लाइक छुप छुप के ना स्ट्रीम देखते हैं जब भी मैं कहता हूँ भाई कोई आ रहा है हेल्प करने तो ये आ जाते हैं हेल्प करने लाइक कहाँ तक पुश करना है डाउन कर दिया 3 टाइम्स हन अभी भी इसको और आगे लेके जाऊं कर दिया डाउन ये लो कर दिया पुश किया ना पुश लाइक मैं इससे ज्यादा पुश नहीं बैक नहीं बैक अब मैं इसको पूरा पुश करूं है ना रुको ऐसे मतलब मैं समझ मतलब रुको यार ठीक है रुको ये लो अब ठीक है अब इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा ये मैक्स है इसका अब सेकंड पैड ओके 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 गॉट इट समझ गया समझ गया थैंक यू
एंड टिंकू आप अबीर की हेल्प कर रहे हो ना उसमें? ये भी इजी होगा। थैंक्स टिंकू, थैंक यू यार। 206 सब्स हो गए ना। रोको मैं बीसी है। एंड अबीर की हेल्प कर रहे हो ना टिंकू? ओके टिंकू। ओह रुको, फ्रॉम डाउन। ओके 1 मिनट, 1 मिनट। इसकी तो मूव भी नहीं है राइट ना। एक मिनट, आदि उसको मैंने पहले बताया था। सॉरी, रुको। इधर ये गया, ठीक है।
अब इसको पुश बियर फ्रॉम अप, मैं वही कर रहा हूँ, पॉइंट्स नहीं है। Got it, got it, got it. Thank you. पता चल गया। वीसी आजा। ट्रस्टी टीम को वीसी बुलाया। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट देना, ठीक है? स्ट्रीम पे कोई नहीं आया तो संभाल लेना, एक मिनट। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। रुको, एक न्यू बंदा है। हेलो जैन अहमद, वेलकम टू स्ट्रीम मेट। So, hi, mate. How are you? True, अब था ना reset, don't move rabbit. कोई मैंने गलती तो नहीं ना की? ट्रू रीसेट, रुको। हाँ जी, रीसेट कर दिया। इस किसको बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंग्लिश में लिख के। अब मैं रैबिट से की लूं क्या? पुश क्रिएट, हाँ दे दिया। लाइक किससे करूं, बियर से या रैबिट से? फ्रॉम बियर like this. Okay, pass. Okay, man. Done. हाँ, true. My friend है. It's me Xanax Beast. Oh, Xanax Beast. Welcome mate. Sorry, मैं पहचान नहीं पाया. Now push here. Now push. हाँ या क्या कहते हैं Xanax Beast. मैं आपको जानता हूँ. लाइक आपने वर्ल्ड ज्वाइन किया था और हमने इकट्ठे में डोमेन भी खेला था. लाइक वो ना, मैं आज ये इवेंट इसीलिए खेल रहा हूँ, रीसेट, ठीक है? आज मैं इसीलिए खेल रहा हूँ कि ये इवेंट खत्म होने वाला है, इससे प्रीमो जेम्स मिल रहे हैं ना. Push rabbit from right. Push rabbit from right. 1 minute. Push rabbit from right. हाँ जी.
इससे ज्यादा नहीं पुश कर पा रहा। And by the way, Zainab, we can push Goba first. Push beer now. Oh, okay. Got it. 1 minute, 1 minute. After that, use Goba to push rabbit. ये कौन बोला? Now push beer again. नहीं कर पा रहा पुश। राइट, रुको। हाँ, ओके ओके, गॉट इट। हाँ, अब अबीर बोलो। थैंक यू। हो गया। हाँ, बोलो। कितने? 4। वो तो मैं कर दूंगा। आदि तेरे पास है कुछ? रुको। ओके, 450 पॉइंट्स मिले एंड 800 और चाहिए ना। एंड 100 प्रीमोजेम्स भी मिल गए मेरे को। ये भी अच्छी बात है। हाँ, बहुत गंदा था। लाइक मेरे में 2 एंड जेनेक्स बीस्ट हेल्प कर रहे थे। क्या बोल रहा? मेरे को तो लाइक 200-300 प्रीमोजेम्स फिलहाल मिल गए। लाइक मैं जल्दी ये इवेंट खेल रहा हूँ क्योंकि ये इवेंट खत्म होने वाला है ना। एंड थैंक यू जैन अहमद कि आप मेरी स्ट्रीम पे आए। एंड थैंक यू यार, बहुत सारा, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये इवेंट आज जरा खत्म होने वाला है तो ना मैं लाइक जब मैं 1:30 बजेंगे तो मैं लाइक थोड़ा एक्सप्लोरर भी कर लूंगा अपना वो जो सुमुरु का रहता है। मैं कह रहा हूँ। और ओ भाई ये कर सकते हो अब। हाँ जी ट्रू। लाइक हेल्प करने के लिए थैंक यू। ये कॉब वाला है। ये कॉब वाला है। आज आ जाओ। एंड जैन अहमद स्ट्रीम पे थैंक यू। पता है आज मैं लाइक चैट पे फोकस ही नहीं कर पाया था। मेरा वो हो गया था। चलो अब सब कुछ सेट है। थैंक यू सब भगवान का। ये एटमॉनिक भाई मेरा वीसी लाइक लीव कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, मैं समझ ही नहीं आ रहा। हम्म हम्म मेरे को भी एक्सप्लोरेशन में मजा आता है। बाय द वे ट्रू, आपको मेरा म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है ना गाने सुनने में?
नहीं गाना नहीं सुना रहा मैं ना लाइक बात बात कर रहा हूँ चैट पे मैं मैं ना एक्चुअली ये वीसी में बैठा हूँ फ्रेंड्स के मतलब सभी वो बाहर की बैठे हैं तो मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ PS5 पे वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया ना वो बहुत वो बहुत वो बहुत लग वो बहुत लग नहीं वो बहुत लैग नहीं करता अच्छा वो जो म्यूजिक बॉट है ना हाँ वो लैग नहीं करता वो लाइक मेरे फ्रेंड ने डाले हैं एक म्यूजिक बोर्ड 1 डाले 2 डाले 3 डाला है एंड बाय द वे जेसन कल आया था वो मतलब ट्रू जेसन आया था आज भी आया था एंड कहता कि मेरे को जाना पड़ रहा है मैं बस हाय कहने के बाद इसलिए काम करते वक्त बैठ जाता हूँ ओ सही है सुन लिया करो डीसी पे लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा डीसी ना बस एक्टिव रहे ठीक है कुछ भी करो फन करो बस डीसी एक्टिव मेरा रहे यू नो ओह आरएच गेमर जेनो व्लॉगर रेड है ये क्या कोकोमेलन जेनो व्लॉगर थैंक यू गाइस थैंक यू फिर से रेड करने के लिए आर्ची सर थैंक यू थैंक यू गाइस गाइस बात सुनो आर्ची सर पे फिर से वो करें थैंक यू एवरीवन कोकोमेलन जेनो व्लॉगर वोटैक्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू टिंकू वाओ 14 की वॉचिंग आ रही है थैंक यू गाइस थैंक यू आर्चस अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो थैंक यू सो मच थैंक यू टिंकू थैंक यू यार सभी का थैंक यू आज आर्चियस थैंक यू सो मच यार आपने फिर से रेड की थैंक यू सो मच गाइस आरजे सर के लिए ओपी कर दो लाइक ओपी लिख दो लाइक गाइस जितने भी मेरे व्यूवर्स हो ओपी कर दो लाइक गाइस आदि आरजीएस इन किन किन का एप्लीकेशन थैंक यू आरजीएस आदि आरजीएस सर के चैनल का वो चैनल का लिंक लेके आना रुको मैं इवेंट पे फोकस करूँ ना गाइस चलो 1 मिनट के लिए स्ट्रीम पे सर पे आ जाओ अभी जितने भी हो ट्रू सारे 1 मिनट के लिए आना थैंक यू जैनो व्लॉगर थैंक यू सो मच गाइस सारे एक बारी आज 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 स्ट्रीम पे चलो एंड उनको रेड हार्ट से स्पैम कर दो थैंक यू आर एच गेमर इनका ट्रू डीसी पे दिया है आदि एक दो बारी और स्पैम करना आज सर्कल लिंक का चैनल एक दो बारी और स्पैम करो गाइस जितने भी हो साखी अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो लाइक जितने भी हो सारे प्लीज जाके रेड हार्ट स्पैम कर दो अ, आदि एक दो बारी और दे दो लिंक एंड गाइस सारे हाँ बस अब रेड हार्ट स्पैम कर दो अभी आप भी जाओ स्पैम वो रेड हार्ट कर दो
चलो बात सुनो बात सुनो क्या 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 कहते हैं गाइस ना थोड़ी वॉचिंग बढ़े ठीक है तो हम सभी आर्चियर सर पे फिर से रेड करेंगे लाइक जितनी भी हमारी 10-15 की वॉचिंग आई ना हम सबसे रेड करेंगे ठीक है हाँ रेड आई थी नेवरफुल कोई ना हम आज ही सर पे जब हमारी हमारी वॉचिंग बढ़ेगी ना तो हम फिर से रेड करेंगे ठीक है लाइक पूरी जबरदस्त वाली रेड करेंगे हाँ टिंकू रुको एक गेम पे फोकस है रुको मेरे हाँ 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 टिंकू सुना Take it easy. यार ये क्या कर रहा है बंदा मेरे को पॉइंट नहीं लेने दे रहा अबे कमीने अबे मैं जीत नहीं पाऊंगा पहले ये इवेंट डेढ़ घंटे में खत्म होने वाला है वाह लास्ट आ गया क्या क्या भाई मेरे को सीइंग ही समझ आया है पर मेरे को उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया 1 मिनट मैं फिर से ट्राई करता हूँ हो गया मौज मतलब मैं समझा नहीं वी2 लिंक पे गए थे क्या उनके थैंक यू यार थैंक यू सभी के थैंक यू बिजी है वो राउंड में हाँ पता है पर थैंक यू यार आप लाइक सभी के थैंक यू सो मच गाइस 1 मिनट के लिए चैट मत पढ़ो मैं स्क्रीन पे बटन्स नहीं देख पा रहा 1 मिनट के लिए हाँ अब हाँ मैं कह रहा था थैंक यू आप स्ट्रीम पे गए लाइक मेरे फ्रेंड ने रेड का है पर मेरे को पता नहीं था लाइक इसने सरप्राइज ही दे दिया थैंक यू ठीक है आप सभी गए और टाइम मिला ना हम वॉचिंग अच्छी आई तो हम एकदम जबरदस्त वाली करेंगे इन फ्यूचर भी करेंगे ठीक है एंड थैंक यू यार क्या हाँ हाँ वो तो पता है हाँ नहीं वो तो पता है हाँ नहीं वो तो पता है
भाई मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ, टफ है। भाई मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ, टफ है। हंसो भी ना, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, फिर से करता हूँ, रुको। बना लेना, इस कॉपी में हो जाएगा सब कंप्लीट। 6,000 मेरे को पहले ठोकना ही नहीं आता था। वो तो आपने बताया कि ठोक भी सकते हैं। लाइक सबसे इजी कौन सा है? आज आज क्वीनीज लाइव ने भी सब्सक्राइब किया सेकंड ना। हाँ, यही यही बता रहे थे कि मतलब सेकंड वाला इजी है। आज रेड आई, आज कितने सब्स बढ़े हैं? चलो आज 6 सब्स बढ़े हैं। दो दो 210 डिपेंड्स ऑन व्हिच यू लाइक मेन टॉप। ओ जैन अहमद, आप भी देख रहे हो क्या? एंड जैन, आप लाइक इंडिया से कहाँ कहाँ से हो? हाँ, ओ यूपी, नाइस नाइस। वो पता नहीं था मेरे को पहले। हाँ 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 हाँ। ओ, चलो। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। अबे ठोक ही रहा हूँ। अबे नहीं हो पा रहा। रुको, ये मेरा लाक है। नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। लेवल लेफ्ट बच्चा ढक्कन है, बच गया। हाँ भाई, पर 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 ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छे हैं जैन। क्या? इट्स सिंपल। लाइक प्रीमो जेम्स मिल रहे हैं ना 20-20, तो ये अच्छी बात है। हम्म हम्म नहीं, 5,500 का है। लाइक इनका जो स्कोर है ना, वो सारा 5,500 है। और मैं एक बात बोलूं,
लाइक जितने भी डीसीपी एंड स्ट्रीम पे हैं गाइस, जितने भी आप सब लोग आते हो ना, आप लाइक सभी मेरी हेल्प करते हो, ठीक है? लाइक जितने भी स्ट्रीम देख रहे हो, ठीक है? जितने भी जेंशिन के एंड जो भी मेरी हेल्प करता है, थैंक यू यार, थैंक यू। थर्ड करना था उसके, अच्छा रुको, फिर मैं इसके बाद मैं वही करता हूँ जैन, मैं वही करता हूँ। अभी निकलना बैनेट, निकल। अबे गेम में तो सब कुछ चलता है, लव एंड वॉर में तो सब कुछ चलता है ना। अच्छा बुरा नहीं वहां देखा जाता। दुख के मारे बा अबे ठोक रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, चल बैनेट, ये मेरी जगह है। ये 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 जैक की जगह है, अगर कोई आया फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा दुनिया का पापा। हेलो हेलो लूसी आलो, वेलकम टू स्ट्रीम मेट। हाँ जी, मैं फिर से जीत गया। वेलकम मेट, रुकालो, सॉरी फॉर आई कांट प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। लुकारलो, नेम टफ है। लुकारलो, नाम बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल। ये कौन है भाई, ये जो अंग्रेज वाला नेम लेके आया है? कौन वो? अच्छा वो कैमा, वो कैमा कैमा एक मॉड है। लुसियारो, स्ट्रीम पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ना आज हमने 210 सब्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। लुका लुकारलो लुकारलो लुकारलो। हाँ जी। किसका किसका? ओह हेलो छोले, कैसे हो आप? डैम दैट गेम्स टू मच फन। हाँ वो गेम मस्ती है। रुक आदि, बंदे का नाम है बदल दे। मैं बंदे का नाम है बदल दिया। ओह बढ़िया जैन, डोंट केयर रेड पॉइंट्स। अच्छा रुको, अबे रुक टिंकू, रुक रुक रुक, एक मिनट, मैं इन चक्करों में लाल पॉइंट उठाने लग गया था। हाँ, मेरी चैट कहाँ भागी? क्या हो गया? वो मैं एक्चुअली सुपर, ये क्या है? टिंकू मैं कैसे दूं? किसकी चैट भागी? अबे नहीं, वो मेरा वो चैट मिस। किसकी चैट भागी? अरे सर्कल के अंदर है ना।
अबे नहीं जॉनली प्यारे बच्चे योरी जी। अच्छा बाहर जाओ। कलेक्ट पॉइंट चेंजिंग। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। Bro, just stream on Sumeru game that was too much fun। हाँ जी वो गेम मजा आ गया। वो गेम मस्त है छोले पाजी, वो गेम मस्त है। हाँ रुक बना रहा हूँ तेरे को। पर करना क्या है? बना दिया बे। रुको वो ओपन कर रहा हूँ। बड़ा यूट्यूब है भाई। अपना घर चैट पढ़ना चाहते हो? मिलेंगे छोले, मिलेंगे। बड़ा यूट्यूबर है, चाहते हो तो सुपर चैट पे मैसेज भेजो। मतलब मैं समझा नहीं जैन। रुको टिंकू की किधर है? ऐड है। रुको सॉरी चैट चैट मिस हुई। मेरा इंटेंशन नहीं था। बड़ा यूट्यूबर है भाई, अपना घर अपना पढ़ना चाहता है तो सुपर चैट पे मैसेज भेजो। छोले नहीं। हाँ जैन मेरे को 500 मतलब 296 सब्स और चाहिए। मतलब हाँ इतने सब्स और चाहिए तो उसके बाद मैं कर पाऊंगा। वो आज लास्ट इवेंट है डे का। हाँ आज लास्ट डे है इवेंट का। ट्रू इट छोले समोसा नॉट क्लॉय गर्ल। गाइस ये इवेंट को खत्म खोने में 1 आवर 30 मिनट्स पड़े हैं। सो खेलो जिन्होंने खेलना है। लाइक प्रीमो जेम्स मिल रहे हैं मस्त। ओ गलती बाय। आई नीड गार्डियंस इन स्कीरो। छोले भाजी मैंने ना लाइक स्कोरा कभी गेम खेली नहीं है, पर मेरे को पता है कि उस गेम का क्रेज था एक टाइम पे। ठीक है तो चलो मैं कर दिया जी, माफ कर दिया जी। अगेन अगर मेरा फेस कैम स्ट्रीम करते हो सॉरी यार। अगर किसी की चैट मिस हुई अहमद सॉरी ट्रू मतलब किसी की चैट मिस हुई तो माफ कर देना ठीक है। आई बिलीव मेरा हो गया सही है। हाँ ये मेरी वो वीडियो का भेज रहा है। ट्रू डार्लिंग चिल करो। एंड सॉरी मतलब किसी की चैट मिस हुई तो माफ करना गाइस। लाइक हम यार डिस्कॉर्ड पे 6 बंदे हैं और लाइक चैट से वो थोड़ा ना मैं टीवी पे ना लाइक मुझे भी बस ऐसी पीसी गेम्स की ऑडियंस मिल जाए मस्त आ जाएगा। मैं बताता हूँ छोले, जो मेरी ऑडियंस है कमीनो रुक जाओ। जो मेरी ऑडियंस है ना ये वर्ल्ड वाइड है ठीक है। तो ये मेरे को सारी जेंशन से बनी है और सभी अच्छे हैं। लाइक सभी के सब लाइक सभी लाइक ये सभी हेल्प करते हैं यू नो। लाइक मेरी हाँ मैं करता हूँ 1 मिनट। ये गेम पे फोकस है। रुको नहीं मैं बताता हूँ छोले। जो मेरे ना पिछले मंथ मेरी हाईएस्ट वॉचिंग लाइक 2 3 की रहती ठीक है। तो इस मंथ मेरा बहुत बड़ा जंप हुआ है लाइक बहुत बड़ा ठीक है। एंड उससे लाइक मेरी अब पीक वॉचिंग 14 15 की जाती है एंड एवरेज की जाती है मेरी 7 या 8 अब। कमीने उठाने दे वो मेरा है। रुको पिन मैं करता हूँ। अबे यार आपकी 3 घंटे में सिर्फ 88 व्यूज आए हैं छोले।
हाँ चलो इवेंट खत्म, अब बैक टू चैट, ठीक है। सॉरी, जस्ट कॉज, बाय। अब जेंशिन ट्राई करो छोले, अब जेंशिन भी ट्राई करो, लाइक जेंशिन से अच्छी वॉचिंग आएगी। मतलब क्या ट्रू? गाइस चलो, रुको, लिंक करना ही भूल गया टिंकू, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ ये छोले बीजीएस स्विमर है, पिन मैसेज, हाँ कर दिया। हाँ ये छोले ना बीजीएम स्विमर है, इन पे भी वही टाइटल तो अच्छा डाला है, वो थंबनेल यार, सच बोलूं। सो ये भी मेरा हो गया, घंटा पड़ा है इवेंट खत्म होने में, ठीक है। शो इस फॉर लोगो, जैनशिन बट वाली प्ले लेटर पैलेस। सही है। हाउ आर यू? हेलो स्पेंडनदास, की हाल चाल ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? लाइक ये ना मैं इवेंट आज ही खेल रहा हूँ। बात सुनो, छोले आप ना लाइक गेम्स के वो करो, क्या कहते हैं, रिएक्शन दो, लाइक जितनी भी गेम्स हैं। कौन सा वाला? अहमद, मैं समझा नहीं, लाइक आप कौन सा वाला बात कर रहे हो? ये तो सारे हो गए हैं। हाँ बोलो, आप कौन सा बात कर रहे हो? अहमद? कौन मोड आ गया? थर्ड वाला, यू डिड दिस, थर्ड वाला क्वेस्ट कह रहे हो? या मतलब इसका मैंने शेंगडू वाली, मतलब ये वाली गेमिंग वाली तो क्वेस्ट कर ली है। अच्छा वो उसकी करेक्टर, वो क्वेस्ट, हाँ वो तो मैंने कर ली। हाँ जी वो मैंने कर ली। अबीर आप भी डीसी में हो क्या? अच्छा सही है, थैंक यू यार। मैं इनमें से कौन सा करेक्टर निकालूं, गेमिंग निकालूं ना? 67 मिनट? कौन सा? नहीं मेरे पास जिंगलिंग है। अरे साशी जैसा नहीं करना है, नीड फॉर स्पीड। हेलो पीटीमी बीएस, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। नो बफर, नीड, हाँ वो वाली मैंने क्वेश्चन कर ली। हैम हैमद, जिसकी ना वो तो पता है। पीटीमी व्हाट यू मीन 67 मिनट्स? आई डिडंट गेट इट। इतर, इतर जेनी, नो आई एम नॉट सॉरी, फैक्टर्स या गेमिंग निकालो। जेनी कौन सी है? बाकियों का कोई ना ज्यादा है स्किल में। जेनी या या ये ठीक है। तो मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं गेमिंग ही निकाल लेता हूँ। नहीं चिंचो, नहीं ये नहीं है, तो मैं ये निकालूंगा। मैं यही ले लेता हूँ फिर। नहीं है। चिंचो कौन है? ये ये
ये गाइस सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, मैं कौन सा लूं? लाइक चैट पे if not soon, it will yeah, pretty me it's going to be over in like 1 hour. Guys, listen, हम ना डीसी में है, ठीक है? मत निकालो, ठीक है? शो योर वेब। सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, रुको यार रुको। मेरे पास ना मैंने कोई देखो मैंने कोई स्पिन स्पून नहीं की, ठीक है? मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ये है, इनसे अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है रुको, ये मैं क्रैक्टस भी हाँ हाँ है ना यार, इंडिया के लोगों, ये तो लड़कियों में देखने हैं। ठीक है रुको 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 रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा, ठीक है? ये मेरे सारे हिंचुन ही ले लो। ये देखो, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो दो बोल रहे हैं मैं वो फायर लूं, एंड चलो चार की वोट आई ये जिंक्यून की भी, और दो की वोट आई फायर पे। ये आई विल से कि मैं फायर ले लूं, क्योंकि वाटर का मेरे को इतना फायदा नहीं है, एंड ऊपर से मेरे पास अ, रुको रुको। हाँ मैं वही मैं चलूँ ट्रस्टी सोने। रुको यार, कोई छोले टिंकू छोले से बात करो गाइस, वेट। आई कैन सी ओनली 3 chats ऑन माई टीवी स्क्रीन। ओके सो लाइक सेंड मैसेज। हाँ हाँ जी, मैं वही ले रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरे को बारबेरा का कोई फायदा, मतलब बारबेरा हीलिंग के लिए है, फायर के लिए मैंने शील्ड भी तोड़नी होती है, तो मैं वही ले रहा हूँ। या टिंकू बोलो, ये लो, हेयर भी। लेट्स गो गाइस। मेरे को फाइनली मेरे को 3 months के बाद कोई करेक्टर मिला, यू नो। फाइनली आई गॉट ए करेक्टर आफ्टर 3 months। हाँ मैं वो भी ले रहा हूँ। रुको यार 1 minute, चैट वो टीवी से जाने दो। अरे मैं हमेशा के लिए रोज करने वाला। ओह, ये भी प्रीमियम जेम्स मिलते, मैं भूल गया था। उसके बुक लगाओ क्रिट डैमेज पे। रुको मैं लगाता हूँ 1 minute दो। गैस चैट मत लिखना, 1 minute। कोई पीटीमी से बात कर लो, वो बंदा इंग्लिश में है। Here we go guys। यूज दी विच एट, ये विच एट क्या है अभी जो ये बोल रहे हैं? जैन अहमद बोल रहे हैं यूज दी विच एट ऑन जैनफी। हेलो साखी, आज आज जाओ साखी। साखी आप पीटीमी से बात करो, आपकी इंग्लिश अच्छी, आप पीटीमी से बात करो, ठीक है? वो इंग्लिश स्पीकर है, तो आप बात करना उससे। रुको 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 1 minute, वो वेपन है ना? रुको, मैं वेपन से किधर गए, मैं वेपन से भूल गया। हाँ, विच कैट। ओके 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 सो ये कह रहे हैं कि ये वाला तैयार मैं उसको दूं, है ना? साकी मैंने जैनशी ली है, वो जैनफी। रुको, ये रुको, लाइक हाँ हाँ
क्या ट्रस्टी टिंकू? हाँ हाँ, देखा देखा। वो पता है एक्चुअली मैं तीन तीन स्क्रीन देख रहा हूँ। पुट दैट स्वॉर्ड ऑन ट्रैवलर। ट्रू। आई गॉट ए गाइस, मेरे मेरे को टीवी पे तीन स्क्रीन, मेरे को टीवी पे तीन चैट्स दिख रही हैं। ठीक है, बन जाऊं? हाँ हाँ टिंकू, ओके ओके। हाँ हाँ जी, जैनफी साखी। आप पीटीमी से बात बात कर लेना, ओके। फ्रॉस्टिंग को नेवर डू दैट शिट ब्रो अगेन। गाइस, लाइक लाइक कर देना स्ट्रीम को, सब्सक्राइब भी कर देना। हम 210 सब्स के बहुत क्लोज हैं। एंड रुको ट्रू, मेरे पास ना ये स्वॉर्ड है। रुको यार, किधर गई? ये स्वॉर्ड है जो मेरे को ये प्लेस्टेशन ये प्लेस्टेशन से मिला है। ये प्लेस्टेशन से मिला है। एक रेगुलर मोड मैं भी डिजर्व करता हूँ। मैं बताता हूँ छोले। अरे रेड गिव्स मोर डैमेज। रुको, लेट मी सी। तो ये कर लेता हूँ, रुको। डिटेल्स, इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। ये लो। हाँ, क्या बीर? वो एक फ्रेंड कह रहे थे कि ये ज्यादा डैमेज देती है ना। हाँ हाँ जी, ट्रैवलर पे। मैं फिर मैं वो कर लूंगा शायद, हाँ। रुको, जो पिक्चर सुनते हैं। साकी आप रुको, एक मिनट। साकी आप पीटीएम से बात करना। एंड रुको, वाइट टैशल हैव क्विक ट्रेड। वाइट टैशल। मैं मासूम नहीं। वाइट टैशल। साकी साकी को डी ट्रस्ट एक लड़की की गौशाले पे लगा। वेयर आर दे? पीछे गया। रुको यार, चैट बहुत जा रही है तेज तेज। बहुत तेज तेज जा रही है, एक मिनट दो। 16 4 5 6। ओके, ये ब्लैक टैसल ना। इस अच्छा, इसको लॉक करूँ ना? 1 मिनट। नहीं 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 नहीं, छोले 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 अब। देखो, ये मत करना प्लीज। छोले प्लीज प्लीज प्लीज, आज बहुत कुछ हो चुका है स्ट्रीम पे। ये मत करना। मेरे ना मॉड्स ना, मैं बताता हूँ छोले, मेरे मॉड्स हैं दो। ठीक है, छोले, मेरा मॉड्स हैं दो। एक है आदि, एक एक है साखी। क्या करना है, क्या हुआ? एंड एक है टिंकू, ये मतलब फ्रेंड है। इस किसका तो चलता है मेरे में। हाँ, वो मैंने कर दिया। ट्रू, कर दिया मैंने। रुको रुको। अच्छा, व्हाइट नेशनल। रुको, व्हाइट नेशनल। सॉरी 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 सॉरी। गलत हो गया। अरे क्या हुआ? वो कुछ हो गया था। ठीक है, तो वो लाइक सॉर्ट आउट हुआ है, सो आई आई डोंट वांट टू। हाँ हाँ, कुछ नहीं, छोड़ो।
ओहो रुको यार, रुको 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 रुको, 1 मिनट किधर गया? हाँ 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 हाँ, वही करने जा रहा हूँ। कोई ना स्ट्रीम, नहीं 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 नहीं, रुको, अभी चिल दोस्त है, कमीना दोस्त है, हमें हमारा दोस्त रहता है यहाँ। रुको, हाँ ये मैक्स कर दिया मैंने, डन, थैंक यू guys. If you are new to my stream, please make sure to subscribe my stream. We are very close to 210 subs, so please like my stream and subscribe to my channel. छोले प्रतीक जलंधर से है, लाइक जलंधर से मतलब जलंधर से है प्रतीक छोले। वाओ 14 की वॉचिंग आ रही है यार। साक्षी का मैसेज, किस पे? गाइस स्ट्रीम पे कौन कौन है, जल्दी बताना। गाइस व्हाई यू कॉलिंग बिटवीन दिस टिंकू, बात सुनो गाइस। स्ट्रीम तो हम बस 20 इजी है। मैं मी रेड ऑन प्रतीक मी गाइस, एक पे रेड करें। आई एम नॉट हियर स्पेंडनास, बात सुनो, जितने भी वो सारे गाइस एक रेड करनी है और सबसे लिख देना लव फ्रॉम ट्रस्टी, लव फ्रॉम ट्रस्टी एंड हार्ट स्पैम कर देना, ठीक है? हाँ हाँ रुको, एक 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 मिनट गाइस, रुको, टिंकू फिल्ला मत देना अभी, आप भी जाना, ठीक है? गाइस जितने भी हो सारे चलोगे? कैरिमनाटी को रेड मारो भाई, मैं नहीं मार सकता, उनके तो सब्स इतने हैं, मैं कहाँ इतना छोटा यूट्यूबर हूँ। चलो गाइस लिंक आ रहा है, जितने भी हो सारे तगड़ा स्पैम मार देना। हाँ दे दे टिंकू, तीन बारी दे दे। गाइस जितने भी है जाओ, सारे जाओ, सारे जाओ। साखी आप भी स्ट्रीम देख रहे हो, आ भी जाओ, आदि जितने भी हो, टिंकू सारे जाओ, लाइक लव फ्रॉम ट्रस्टी लिख दो एंड हार्ट स्पैम कर दो, जाओ सारे। गाइस सारे जाओ, अभी आप भी जाना, सारे जाओ, जितने भी हो सारे जाओ। भाई मेरे व्यूवर्स हो, थोड़ा तो कर लो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी जाके उन पे करो। रात खराब हो जाएगी। बात सुनो, ट्रू 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 स्पैम कर दो या जाके एक बारी, रिक्वेस्ट है। जैन बस लाइक स्पैम करके आ जाओ, लव 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 फ्रॉम ट्रस्टी लिख दो। हाँ कोई बात नहीं, पर लाइक उन्होंने रेड किया ना, तो उन पे भी एक बार ही रेड कर देते हैं, ठीक है? ओके जैन, ओके ओके ओके।
Okay, Zan, okay. थैंक यू गाइस जितने भी गए आप सभी का थैंक यू दिल से थैंक यू कि आपने वहां जाके स्पैम किया हाँ हाँ नेवरफुल वो तो मैं जानता हूँ वो जूम तू ही है ना ट्रू हाँ ओके ओके हमको अगर आपको मिलता है तो हम अभी कर देंगे पर हमको पता नहीं ना कि करते कैसे हैं अबीर ठीक है अबीर ओके थैंक यू माय चाइल्डहुड फ्रेंड आपका चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है मैं समझा नहीं 1 मिनट 1 मिनट थैंक यू गाइस थैंक यू रुको रुको ओके 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 अब कौन जा रहा है अब मैं चैट देखता हूँ बाय बाय ओके हम दोनों एक साथ सामने सामने रहते हैं ओ ओके ट्रू थैंक्स ट्रू थैंक यू सो मच मैन हाँ बोल बोल
चलो बाय आदि, हम दोनों एक साथ रहते हैं, चलो वो तो बढ़िया। हाँ, अब 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 मैं चैट चैट पे हूँ बैक। साकी आप भी स्ट्रीम पे हो क्या? एंड आदि, ये आदि किधर गया? हेलो आदि। टिंकू कुछ ढूंढना है हेल्प करने के लिए अबीर की है? अबीर की हेल्प करने के लिए ढूंढा कुछ? जा साकी को पता होएगा। क्या हुआ? क्या कहते हैं योरिची, क्या क्या हुआ? एंड थैंक यू यार जितने भी स्ट्रीम देख रहे हो, 14 की वॉचिंग गई, थैंक यू यार सभी का, दिल से थैंक यू। कौन आया सर्वर पे? जैन, जैन को हेलो कर दो ना टिंकू। गुड नाइट जोन की तरफ से भी कर आऊंगा। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू जो आपने लास्ट गए, थैंक यू सभी का भाई। आज 14 की वॉचिंग आई है। रिकॉर्ड था पहले पिक 13, तो आज 14 की भी आई है वॉचिंग। थैंक यू यार सभी का, थैंक यू। हाँ टिंकू। हाँ जैन सॉरी, आपको ना आदि ने वेलकम करना था, और बाई मिस्टेक आपको ना वीडियो वाला ऑप्शन दब गया। एंड हो सके ना उसको माफ कर देना। लाइक वो माफी मांग रहा है, तो आप ना मेरे मॉड को प्लीज माफ कर देना, ठीक है? हाँ 6 की वॉचिंग होगी, कोई ना। वो एक्चुअली फ्रेंड्स होने चले गए हैं ना। एंड लाइक बीच में मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? गाइस ये कौन आया चैट पे, मतलब इसी में? अच्छा जैन भी हो? जैन आप मतलब आप बोलना, रुको जैन कौन है, रुको जैन आप कुछ बोलना अब। हेलो, ये आप हो ना जैन? अच्छा, थैंक यू यार। वो वो मेरे मौज से ना बाई मिस्टेक आपको वो वीडियो कॉल लग गई, तो वो माफी मांग रहा था। तो वो लाइक वो कह रहा था कि वो गुस्सा गुस्सा ना हो जाए, मेरा सीन हो गया है। अच्छा, वही मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि जैन एक बड़ा बंदा होएगा, लाइक मेरे से तो 7 8 साल बड़ा ही होएगा। सही है, बस मैं भी 19 का ही होने वाला हूँ। अब ये बताओ, मैंने आज की उसकी स्ट्रीम देखी थी, तो उनकी आवाज आई है, तो मेरे को कॉपीराइट तो नहीं ना पड़ेगा? क्यों? वो नहीं देंगे?
हाँ जी। नहीं वो नहीं देंगे, क्योंकि लाइक लास्ट टाइम भी रेड रेड की थी ना, तो उनकी स्ट्रीम चल रही थी, लाइक रेड किया तो नहीं होता। एंड बाय द वे थैंक यू जैन, आपने लाइक कल मदद की लाइक डोमेन में, एंड उसके लिए भी थैंक यू आपका। रेजन फुल है, लाइक वीकली बॉस करूंगा रात को। नहीं वो 14 की वॉचिंग आ रही थी, वो लाइक पहले ऑनलाइन थे, मेरी मॉड भी आई थी, पता नहीं उसके लाइक मम्मा आ गए जब क्लास चल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुबई के 12 बजे तक मेरी मेरी क्लास चल चल रही है, तो लाइक आएंगे पर 1 बजे। हाँ लाइक इंडिया के, लाइक वो कह रहे थे कि 11 बजे तक क्लास ही चल रही है उनकी। सो मेरा इवेंट हो चुका है खत्म फाइनली, ठीक है। कितने प्रीमो जेम्स मिले? 1000 प्रीमो जेम्स मिले ना, सही है। एंड मेरे को मून भी मिल, हाँ जी। ये मेरे को एक फेट पे मिल जाएगी। आपको क्या लगता है जैन, मैं जो 1 लाख प्रीमो जेम्स निकालूंगा उस पे कितने व्यूज मिल जाएंगे? पाँच सौ? बस 500 व्यूज? क्या डालना? भाई जिन्होंने नहीं मतलब मैं वीडियो ही बनाऊंगा, मैं वीडियो डालने की बात कर रहा हूँ कि मैं वीडियो डालूंगा तो लाइक 10-20 हजार से तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे ना। ऐड तो मैं डालूंगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख व्यूज व्यूज तो मिल ही जाएंगे ना। एंड टिंकू अपने दूसरे अकाउंट से आ जा। आज पेंटन दास भी स्ट्रीम पे आया था, पीटी भी आया था, सारे आ गए थे आज, राइट। 14 की वॉचिंग, भाई इतनी तेज वॉचिंग मेरे टीवी पे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था भाई, किसकी चैट में पढ़ूं पहले। मेरे साथ ये सीन हो रहा था। तब नहीं, तब तक तो मैं पीसी ले लूंगा, मतलब वो मॉनिटर। हाँ जी, वो मेरी लाइक ओपन हो जाएगी सब्स में। टिंकू कुछ वो अबीर 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 का कर दे, जो उन्होंने काम बोला है। क्या दूं? वो वॉकी मून परचेज करना है ना? रुको, जैन को बताना, जैन ना एक फ्रेंड है, कोनो ने ना वॉकी मून खरीदना है, ठीक है। और वो बांग्लादेश में रहते हैं, तो उनको परचेज कैसे करके दें? हाँ रुको, ये शॉप में है क्या, ये वॉकिंग मून?
वहां चलता नहीं ना। बांग्लादेश से है। लाइक ये उनकी आईडी है, रुको ये देख रहे हो। ये मैं तो कहता हूँ कि मैं पैसे डाल दूंगा, पर वहां ना कोई पेपल चलता है, ना गूगल पे चलता है, ना पेटीएम चलता है। सीन ये हो रहा है। हाँ टिंकू, अबीर को टैग करना। हाँ वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको टैग करना। पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, मैं वही बोलूंगा। टिंकू टैग करना अबीर को। सॉरी। आस्क अबीर, आई एम इन स्ट्रीम। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे एक सोल्यूशन पता है। क्यों हम ये कह रहे हैं, अबीर आप अपनी आईडी दे सकते हो क्या जेंशिन की? मैं आपको क्या आईडी फोन से पे खोल सकते हो क्या? लाइक मैं आप अपनी आईडी दे दो और आप अपना पासवर्ड बदल लेना। लाइक मतलब आईडी दे देना और आप अपना लाइक पासवर्ड चेंज कर देना। मैं आपको लाइक यहाँ से खरीद के दे देता हूँ, क्योंकि यही ऑप्शन है बेटर। अग, अग, अगर आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लग। अंडरस्टूड। जी पे रिडीम कर सकते हो। गूगल पे वहां चलता नहीं है। क्यों? ये ना अभी बांग्लादेश से है, तो वहां ना लाइक पेटीएम चलता है, ना गूगल पे चलता है। सीन वो है। नहीं, पेपैल भी नहीं वहां चलता। कोडो शॉप कर दो। आई कोच कोडो शॉप। अबीर वहाँ आपके कोडो शॉप है क्या? रुको। अबीर अबीर वीसी आना। वॉइस चैट। नहीं। ओके तो क्या हो गया? इंडिया पे है कोच शॉप, है नहीं। वॉकिंग टॉप अप। ट्रू। जस्ट पुट यू इन पेमेंट मोड। यार इनकी ना। हेलो हेलो। मैं ये कह रहा कि आप ना अपनी जीमेल वो वो बता दो जेंशन की। मैं आपको परचेज करके दे दूंगा सुबह। हाँ आप आप ट्रस्ट नहीं हो तो आप वीडियो कॉल कर लेना। मतलब मीन्स आप। रुको रुको, अभी अभी मत देना। अभी मत देना। स्ट्रीम के बाद ही दूंगा। मतलब स्ट्रीम के बाद ही देना। क्या? ढूंढ लो। ये ये आईडी ये आइडिया एम ने बताया कि ना यूआई की बंदे की जीमेल ही ले लो।
आजकल नींद में बहुत मेरे से गलती से हो रही है। ट्रू, आप अभी भी स्ट्रीम पे हो क्या? हाय, हु डिड यू चीज इन लैंटर्न? सॉरी, आई वाज एट चर्च। Time to go. Jason, I I choose Zenfi. Wait, I I will show you. 1 minute. हाँ, सोने जा रहा हूँ। तुमने बोला कुछ वॉकिंग? हाँ, वो ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने वॉकिंग मून खरीदना है और मैं कह रहा था कि ये ना अपनी वो दे रहे हैं यूआईडी, मतलब जीमेल। मैं वो कह रहा था, रुको। ओके, रुको रुको रुको। जेसन, आई विल शो यू। मैंने लिया है वॉकिंग बहुत बार। हाँ, मतलब मेरे को तो नहीं है। यूआईडी मत दो, यूआईडी मत दो, मतलब लाइक वो दे रहे हैं, मतलब जीमेल, तो मैं उनको परचेज करके दे दूंगा। जेसन, आई पुल दिस, आई चूज दिस वन because I need a like good pyrocracker, so I choose this one. मतलब इजी है। नहीं, मैं वॉकी मून नहीं ले रहा। ट्रू, मैं किसी फ्रेंड को दिला रहा हूँ। या जेनफी इज गुड। उनके फोन पे आईडी खुद खुल सकती है। मतलब 210, wait, 210 subs done. Thanks guys for 210 subs. Like, thank you all. कोई साकी को बुलाएगा? या अबीर आप हैंडल लाइक आप बात कर सकते हो क्या जेसन से? लाइक बातें कर लो। ये इंग्लिश स्पीकर है ना? अगर फोन पे जेंशिन आईडी ओपन करोगे तो जीपी गिफ्ट कार्ड लेके जस्ट गिफ्ट कार्ड वो कैसे लेते हैं? गिफ्ट कार्ड कैसे लेते हैं? हाँ ट्रू, आपको पता है मतलब कैसे ले सकते हैं गिफ्ट कार्ड जेंशिन में? हाँ, I got to go. Okay, bye Jason, and thanks for joining my stream, mate. It means a lot to me. Bye mate. नहीं, बांग्लादेश में। इसका लास्ट रहता है। हाँ, ये हाँ हाँ। फिर जैसिन फोन में रुको ट्रू, रुको टिंकू, ये ट्रू की चैट देखना। फिर जैन गब्बई, सुनो सुनो। ट्रू ये बोल रहा है, फिर जैन, अबे सुन तो लो। फिर फिर ट्रू ट्रू बोल रहे हैं, फिर जैसिन फोन में खोल कर बाय वॉकिंग पर वो हो जाएगा। कोड बैलेंस रिडीम कर लोगे तो। हाँ, अभी
जैन जैन चैट देखना, ट्रू ने भेजा है। डी 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 डीसी पे टाइप करो। टिंकू ट्रू, अबीर अबीर कह रहे हैं कि उन्होंने लाइक वो रीसेट मार दिया पासवर्ड, एंड वो लाइक वो आईडी दे रहे हैं। लाइक हमको कोड बनाना भी नहीं ना आता जेंशिन में। भाई तुम मैं बताता हूँ डीसी पे स्टेप। ट्रू, आप डीसी ज्वाइन कर लो, फिर हम वीसी में ही हैं। रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट डीसी पे कर लेता हूँ। हाँ, अब आप डीसी के वो वीसी में आ जाओ और वीसी में बता दो, मतलब वीसी में बता दो भाई। पर मैं माइक नहीं खोल सकता, सब सो रहे हैं। ओ कोई ना कोई ना। वाह, मेरा खराब गया एक। मेरे को पता नहीं ये कौन सी मैं जगह जगह कर रहा हूँ। ट्रू ने बीसी ज्वाइन किया क्या? टिंकू देखना, एक मिनट रुको, मैं ही देखता हूँ। नहीं फिलहाल नहीं है, फिलहाल मैं हूँ, जैन है, आदि है, टिंकू एंड अबीर है। मैं टाइप कर दूंगा जर्नल चैट में। गाइस ट्रू की चैट देखना, वो जर्नल चैट में टाइप करने वाले हैं भाई। मैं 3 बार ये हेल्थ डैमेज मार रहा हूँ और तीनों बार गलत निशाने पर लगा। रुको यार, बात ही खत्म। चल जा, सीधी लगा। और अब कोई न्यू इवेंट तो नहीं ना आ रहा बाय द वे? अभी हाँ। कौन कौन? 300? अच्छा 300 प्रीमो जैम्स। 300 करोड़ प्रीमो जैम्स। सही है। 300 करोड़ प्रीमो जैम्स भाई, जेंशिन वाली ना कंगाल हो जाएगी कंपनी। 300 करोड़। वही वही वही। रुको यार रुको, अब ये अश्वाना रेलम एक्सप्लोर कर रही हूँ यार बस। ट्रू ट्रू ने कुछ भेजा क्या? ट्रू आपकी चैट नहीं आई, थोड़ी देर में वो साइट खोलने दो, वो कुछ सेटअप खोल रहा है। हाँ डीसी जर्नल चैट। ट्रू आपका कोई वहां मैसेज नहीं आया? हाँ वो इन्होंने जीमेल भेजा है, हम वो कह रहे थे कि कोड बना के भी कर सकते हैं। हाँ
भाई पर मैं परचेज कैसे करूंगा? मेरा फ्रेंड परचेज कर सकता है ना। आदि तेरे पास है? आदि तेरे पेटीएम में 300 है। टिंकू तेरा भाई प्रतीक को बोल देते। भाई वो कर देता। जहाँ मैं जॉनी को बोल देता। मेरे पास खुद नहीं है ना, लाइक है पर लाइक मैं क्या बोलूं यार। अभी अगर मैं लाइक कल कर दूं, लाइक पहले अगर 10-20 मिनट ये पहले हो जाता ना तो मेरा फ्रेंड फ्रॉस्ट प्रतीक कर देता। नहीं नाराज नाराज है भाई। मैं ये कह रहा ट्रू की बात सुनना टिंकू। वो ट्रू की बात सुनना। कहाँ पे साखी आ रही है जा रही है? मेरे को पता ही नहीं चल रहा वीसी आ कौन रहा है जा कौन रहा है। क्या अबीर किसका? टू ब्रो वो बता रहे हैं कि रिडीम कोड वाला सबसे बेस्ट है। वहाँ मैसेज ओपन करो, वहाँ टू कुछ कहना चाहता है। रुको ये कैसे करना है? रुको इसके अंदर जाना है ना? क्या 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 कहते हैं जैन? हाँ भाई मैं खरीद सकता हूँ पर एडी रात को नहीं मैं खरीद सकता। फिलहाल ही मैं खरीद सकता। मैं सुबह में कह सकता हूँ लाइक अभी मैं अगर आप स्ट्रीम पे लाइक ये वाला आइडिया 10-20 मिनट पहले देते ना, हम लाइक खरीद देते। पर अब फ्रेंड्स सोने चले गए हैं। सीन वो हो गया अब। अबे करने को तो मैं अभी कर दूं, लाइक दी बैठे हैं। लाइक नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं आज खरीदता तो 90 प्रीमोजेम्स मिल जाते ना। और वो पता है क्या है ट्रू? जो इन ये देखो ये जो ट्रस्टी यो कैमा हाउ आर यू वेलकम टू स्ट्रीममेट। सो गाइस मैं बताता हूँ, अबीर ने ना अपना जेंशिन का सारा मैप एक्सप्लोर किया है। तो इनके मैप पे एक भी प्रीमोजेम्स नहीं है। तो सीन वो है। यू आर गुड good to hear Kama good to hear guys। ट्रू ट्रू रुको ट्रू
जैन रू जैन बात सुनो अबे कैम अबे योरिटी ये कैम है गाइस ये अबीर की प्रोफाइल देखो इसके सर्वर पे कोई चेस्ट नहीं है तो इसलिए ये व्हाट Emma, I am talking with my friends we are on DC. Why we have two Tinku? Why we have okay. Tinku has two IDs. So he's doing fun, you know. Frost Tinku and Tinku. Yeah, Frost Tinku and Tinku. Gamma Tinku and Tinku. Lol. Zan, आना Zan, इधर इधर आना Propagate. Shadow Raven, let night fall. I summon thee. Propagate. Oz, reveal thyself. रुको 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 हम 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 सारे हैं टर्न बाय बोलते हैं टर्न बाय साखी आपकी क्लासेस ओवर होगी क्या अब I can't hear you. Oh. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the... By royal कोई decree. मदद करना मैं क्या 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 बोल रहा था
गाइस मैं बताता हूँ हमारी वीसी में ऐसा बंदा बैठा है जो 80 की पीटी हार चुका है 80 की पीटी तो ये जो मैं बताता हूँ जो मेरा मेन अकाउंट है ना मेरे पास मेरे मेन अकाउंट पे 755 का करैक्टर्स हैं तो आदि ये कह रहा है कि मैं डी लुक पे 82 की पीटी हारा 82 की पीटी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं 1 लाख प्रीमो जेम्स की स्पिन करूंगा मैं ना हार जाऊं गंदी वाली बात तो सही है ट्रस्टी लॉर्ड रुको क्या बोल रहे हो मैं कंफ्यूज मोड दे रहा हूँ मोड दारू मेरे से मोड दूँ किसको हाँ उसको मैं करता हूँ 1 मिनट दो अभी करता हूँ हम बीसी में कौन कौन है लाइक सारे तो हैं अच्छा टिंकू नहीं है ट्रू है जैन हूँ मैं हूँ अबीर है साकी है सही है रुको हाँ मैं जैनफी को वो करूँ ना 1 मिनट जैनफी किधर है हाँ हाँ रुको रुको हाँ कौन बोल रहा है ट्रू ट्रू आप बोलो क्या अच्छा I created another universe and found a paradise. नहीं टिंकू शोर नहीं आ रहा लाइक किसी and the princess and इतनी पीटी पे हारने के बाद हाँ वो तो है 82 की पीटी हारा तो दर्द तो होएगा ही लाइक यप आई एम कंफ्यूज मोड हाँ ये वो एक्चुअली ना क्या हो गया था I hear the voice of fate speaking my name. कल ट्रस्टी में आता हूँ कॉलेज है हवा में 1 मिनट Do not seek to नहीं तो हाँ 1 मिनट 1 मिनट देख लो गाइस I created another universe. The secrets and of the found mechanical a arts are too profound to convey in a few and the princess simple and words. Oh, but why must the listener grow weary whenever I begin to divulge them? रुको मैं जैनफी अब वो करूँ ना वैसे ट्रू आप मास्टर से हो जा ट्रूली आज जब वेस्ट बंगाल से हो लाइक मैंने पूछा था अभी किस पे हाँ वो
आज पॉसिबल नहीं है जैन, पता नहीं लाइक कौन बोल रहे हो, जैन क्या ट्रू पता नहीं, आज पॉसिबल है लाइक मैं इनको कल ही दबा सकता हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स सो चुके हैं एट द मोमेंट यू नो। हाँ आ जाओ आ जाओ जिन्होंने भी करना मैक्स मैक्स लेवल का। ट्रू करोगे जेनेक्स आप वीकली बॉस वीकली बॉस People of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. वीकली बॉस नहीं सारे करेंगे ना। हाँ नहीं ये हमारे साथ अबीर अबीर भी होंगे, यहाँ हमारे साथ अबीर भी होंगे ना। नहीं हम हमारे साथ अबीर भी होंगे ना, अबीर एंड जेनेक्स। हाँ सबसे मस्त मेरा है कि मैं PS5 पे खेलता हूँ। एंड जेनेक्स सॉरी जैन आप भी वीकली बॉस कर रहे हो ना। कौन सा शॉर्ट कौन सा मैं अच्छा शूटिंग में ओ लाइक मेरे कजन्स भी करते हैं शूटिंग में। राइफल की लाइक कोनों ने लाइक शूटिंग में स्टेट खेले हैं, नेशनल्स नहीं खेले। लाइक मेरे को जितना पता है उन्होंने नेशनल्स नहीं खेले, बस स्टेट खेले हैं। भाई मेरे बस 290 सब्स और चाहिए एंड मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत बहुत खुशी है यार। क्या है गाइस, कौन कौन वीकली बॉस करने आ रहा है अब। हाँ मेरा सर्वर भी वो हुआ था रिफ्रेश। तो वीकली बॉस कौन कौन करने आ रहा है। ओके सो हम लोग जाएं या कोई आ रहा है। चल ट्राई कल कॉलेज है। ओके ओके आदि चलते हैं। गुड नाइट मैन। तो अबीर अबीर किधर गया। ये ट्रू नहीं कर रहे क्या।
It's a new week. Yeah, guys, it's a new week. True नहीं कर रहे क्या weekly boss? I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. So साकी आपने weekly boss करने हैं? Like true तो चले गए हैं. I am. Give me. ठीक है रुको. हेलो बहन का भाई, अगर आप स्ट्रीम पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज. एंड या पीटी में इट्स न्यू वीक. ऑन कर दूं? यू कांट कॉपी. हाँ वो तो मैं जानता हूँ. मैं कल से ऑन कर दूंगा टिंकू. रुको गाइस. साकी भी आर के तो टाइम देना. नहीं जैन मतलब अगर स्ट्रीम पे आते हैं लाइक कह देते हैं कि लाइक सब्सक्राइब कर दो. लाइक रिक्वेस्ट नहीं करते पर कहते हैं कि स्ट्रीम पे आ जाओ. सो अबीर भी आ गए हैं तो ये LHRV भी हैं. अच्छा तो हम ऑलरेडी यहाँ 4 हैं तो शुरू करें फिर. ऑफिशियल का फ्रेज दिखा दो. वो पता जैन पता क्या स्ट्रीम पे न्यू बंदे आते. अरे वो वीकली नहीं कर पाऊंगा फुल है. रुको ट्रू फिर आप भी ज्वाइन कर रहे हो ना. रुको वैसे वीकली का कॉप मैच नहीं मिल जाता है. नो प्रॉब्लम. लाइक हम मिल जाता है नॉर्मली. मैंने खत्म कर लिया था. अच्छा नो रिजाइन. अच्छा तो फिर तो मैं आपका वेट कर रहा था कि लाइक हम 4 कर लेते हैं वीकली बॉस. सो या सो वन स्पेस खा लिया गाइस. वन स्पेस खा लिया. कल कर ले. रीसेट हो रहा है वीकली बॉस. आई वाज सो स्लीपी. PT me. So this guy is you, right? This one. Wait. Uh, this one is you, right? PT me. आपके वॉइस को क्या हुआ? कुछ नहीं. PT me. This is you, right? Hello, PT me. सॉरी बहन का भाई. I'm sure people of the adventurous साखी PT me से बात करना. PT me से. Then why? Bro मेरी वो थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है बोलने की. I did 2 things in just 1 minute. ओह आप बात करना. ये जो थे ये मतलब यही है ना PT में. रुको ये वाले. रुको कहाँ गए? किधर गए PT में हैं?
गुड नाइट भाई, आज फिर 2 टेक आएगा। हाँ टू स्ट्रीम पे आए, थैंक यू बहुत ज्यादा एंड गुड नाइट मेट। आज स्ट्रीम पे थैंक यू यार बहुत ज्यादा। ये पीटी में ना, सो अभी आप आ रहे हो क्या? तो गाइस फिर हम वीकली बॉस वुल्फ से शुरू करें या किससे शुरू करें? गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट टू। सो हम पहले वुल्फ कर लेते हैं। है ना जैन एंड साकी, ये कर लेते हैं। स्टिल वुल्फ या वुल्फ स्टिल 866 XP AR लॉल। लैवलप पे जो बहुत चाहिए वही करो। नहीं मैं वही तो कर रहा हूँ एंड मेरे हाँ लाइक मैं सभी बॉयज करता हूँ। यस दैट वाज यू। ओके सो यू आर फ्रॉम वियतनाम राइट? ये कंट्री की स्पेलिंग ठीक ही बोल रहा हूँ ना? वियतनाम। आप सा ही पूछना कि ये वियतनाम से क्या? जैन पता है क्या है, जो न्यू आते हैं ना लाइक उनको बोलना पड़ता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना वो करते ही नहीं है ना। हेलो जैन, नहीं मैं तो चढ़ गया हूँ। ये इजी, रुको साक्षी मैं टेलीपोर्ट लगा रहा हूँ, टेलीपोर्ट से आ जाओ अगर है। नहीं है खत्म है, आ जाओ वैसे ही आ जाओ। आई एम कमिंग। पीटी में यस वैसे भाई मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। 14 की वॉचिंग थी और मैं चैट पढ़ने में इतना कंफ्यूज हो गया था। I don't want to be ganked by that guy right now, so I don't want to be ganked by that guy right now, so I will stop. मतलब इसका मतलब समझाएगा इसका? अभी मतलब समझा सकते हो क्या? I don't want to be ganked by that guy right now, so I will stop. नहीं टैंक मतलब वो मजबूत है, मतलब पीटी में are you talking? नहीं अच्छा, so you mean PT me you mean Xanax is strong, like Xan X Beast? You want to say that? Maybe I wasn't meant for this world. चलो पहला हो गया। एंड थैंक यू टू वो समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये पीटी में क्या कहना चाहता है। सो अब करते हैं चाइल्डी। चाइल्डी हाँ कौन सा? वो सोलो है ना? ये सोलो है।
name in humble supplication. नहीं वो सुनो है. No you can't. ओ हाँ मैं गुड नाइट. हाँ गुड नाइट मैं जा रहा हूँ अब सच में. थैंक्स यू थैंक्स मैन. आज स्ट्रीम पे आया आपने बहुत 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 अच्छा दिया. थैंक्स मैन. रुको क्या मैं बस 2 पे ऑफ कर दूंगा. मैं उससे ज्यादा नहीं जागता. लाइक कितना तो नॉर्मल है. मैं नहीं शुरू कर पा रहा जैन. हाँ बस 2 ढाई बजे तक मैक्स. ढाई ढाई बजे है. नहीं हो रहा. ये चाइल्डी का क्या कहते हैं जब चाइल्डी को गुस्सा चढ़ता है ये वन शॉट करता है क्या. हाँ चाइल्ड सॉरी चाइल्ड. तो मतलब ये वन शॉट करता है क्या. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine. साकी क्या हो रहा है. आपके मम्मा आ गए क्या. Melusines are beautiful creatures. किसके आई गेस मम्मा आ गए. Be sure to befriend them. ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे. रुको. सॉरी साइंड अगेन. रुको 1 मिनट. मेरे को हेल्पफुल करने दो. मेरे को लगा इसके मम्मा आ गए थे. हाँ हाँ टिंकू. हाँ मैं करूंगा. और अभी बात सुन. एंड प्रतीक से बात करना कि हमने अबीर को सुबह वो दिलाना है वॉकिंग मून. आई क्लोज डिस्कॉर्ड. अच्छा आप डिस्कॉर्ड पे नहीं हो. ठीक है. जेनएक्स. नहीं नहीं वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है. उन्होंने बंद कर दिया. लाइक वो फोन पे खेल रहे हैं एंड डिस्कॉर्ड वो लैपटॉप पे वो खोला है. हाँ तो लाइक वो स्ट्रीम से ही सुन पाएंगे. अब वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है. Water comes in many flavors to the ये हाईएस्ट है. Mondstadt water is crisp and pure, while जो water in टिंकू ने कहा वो Moonlight किया. has an enduring aftertaste. In Inazuma, मतलब the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru. गाइस आज की स्ट्रीम पे लगता है कि 300 व्यूज आएंगे. नो आई एम फाइटिंग वाज विद यू ना. हाँ आई विल डू दिस आफ्टर. ओके. मैं क्यों ये ले रहा हूँ गाइस. क्या गलत कर दिया क्या. क्या क्या क्या. भाई क्या साले. नहीं मैं समझा ही नहीं. लाइक तुम दोनों का लाइक जेनेक्स ने क्या बोला एंड अबीर ने क्या बोला. मेरे को कुछ समझ नहीं आया भाई. अभी बीसी में क्या हुआ मेरे को कुछ समझ नहीं आया. कुछ मेरे को नहीं समझ ही गया. समझ गया जो. हाँ कि तो वो ज्यादा डैमेज देती है. एंड मैंने बारबेरा लिया एंड हेल्थ बढ़ी. और इसने कहा कि बढ़िया हीलर ले. और आपने उस पे बोला कि तू चुप कर. राइट.
ये सिंगोरा है, सिंगोरा। हाँ Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. शुरू कर दूं? भाई पता है ट्रू ने भी ना एक मदद की थी, लाइक मेरे ना वो नहीं मिल रहे थे, क्या 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 कहते हैं वो, अमृत पूल वाले भाई। उस बंदे ने मेरे 36 में लास्ट 2 रहते थे, उसने पता नहीं कहाँ से ढूंढे, पर उस बंदे ने ढूंढ के दे दिए थे, वरना वो मैं ढूंढ ही ना पाता वहां। किसके? जैनशिन के? साकी नहीं तोड़ नहीं सकते ना। मैं मर रहा ये भी है। हाँ साकी वो लैपटॉप से वो दूर है ना। मेरा कांड होने वाला है, मेरा कांड होने वाला है, होने वाला है मेरा कांड। हो गया, टूट गई नहीं। जेनेक्स हुट्टो से मारो। बच गया। आपके लिए तो अच्छा है, लाइक आपकी मैं बार बार ले आता। अब ना साक्षी का ये नेवल्यू का मतलब देखे ना, सॉरी हाँ सॉरी लाइक मैं कुछ सोच रहा था, मतलब सॉरी। साक्षी अबला नारी सब पे भारी, इसमें ना एक बात याद आती है, अबला नारी सब पे भारी करते सबका कांड। हाँ ब्रो 230 उससे ज्यादा नहीं। मैं मतलब मैं 2 बजे मैं सो जाता हूँ, फिर मैं आराम से लाइक 8 बजे जाग जाता हूँ। मैं गया, इससे बढ़िया मैं हिलर ही ले आता। ब्रो 230 यार प्लीज, मैं 230 सोच। हाँ हाँ भाई पता है क्या है मेरे पास ना, लाइक मैं मेरी तो उससे कम होगी। अब भी 5 और पड़े हैं टिंकू। हाँ राइडन भी पड़ी गया है। हाँ चलो गाइज एक और फिर जैनेक्स मेरे पास ना ये स्मूरो की सीरियल्स पता है कितने पड़े हैं? 1000 पड़े हैं स्मूरो की सीरियल्स, डैंडो सीरियल्स। हाँ नहीं, अगर वो इसका स्मूरो ट्री का वो मैक्स करना है उसके लिए 1700 कुछ चाहिए। वो स्मूरू का जो ट्री है ना, वहां ट्री, उसके लिए 1760 कुछ चाहिए और मेरे पास 1000 है। 1700। हम ये मार पाएंगे?
जा नहीं मार पाएंगे, शील्ड तोड़ पाएंगे, जा अबीर भी हैं, जा इनको बुला लेते हैं। अगर शील्ड तोड़ पाएंगे, क्योंकि मेरी एम्बर घटिया एक्सपेक्ट मत करना कि कि ये कुछ बच्ची काम भी कर पाएगी। चलो ठीक है, शुरू कर रहा हूँ। अभी भी हंसी आ रही है। साकी बाय द वे, आपकी लाइक 12 बजे तक क्लासेस, मतलब वो मतलब संडे को 12 बजे तक क्लासेस करते हैं। भाई तो बोल देते ना, मैंने बोला था कि मैं शुरू कर दूं। इट वाज एक्सटेंडेड। भाई गंदी गलत बात है साकी। लाइक संडे को 12 बजे तक कौन क्लासेस लेता है रात के? हाँ, इसके दुबई के रूल्स भी बहुत अजीब हैं भाई। दुबई के रूल्स भी बहुत अलग है। लाइक क्या ही बोले। हाँ 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 हाँ, माई टीचर। भाई ऐसी टीचर को ना साकी, लाइक मैं क्या ही बोलूं भाई। रात के 12 बजे तक बच्चों की जान लेनी है क्या? नहीं, मैं वैसे नहीं बोलता। मैं लाइक छोड़ो यार। हाँ हाँ, पता है बात करनी है, मुझे पता बात करनी है। चलो चलो भाई, डैंड्रो का फायदा है यहाँ। डैंड्रो भी डैमेज दे रहा है। लेट्स गो। मर गई। मर गई मर गई मर गई। कोई अच्छे आर्टिफैक्ट्स दे दे भगवान। अब अबे मेरी 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 स्ट्रीम देखो। मेरी स्ट्रीम देखो। नहीं गई। क्या क्या? एक मिनट टिंकू, मैं जैनफा अपग्रेड करूं क्या? उसके लिए ये बॉस मारना पड़ेगा। प्रीमोजियो शॉप, ये जो भी है नाम इसका। जियो बिशप, जो भी इसका नाम है भाई। जैनशिन वालों ने ना, ये अमृता पूल, ये काया, ये जितने भी हैं, ये आधे तो इन्होंने इंडिया से ही उठाए हैं नाम। कम फ्रॉम हियर। ताकि ये इजी वे है। नहीं वो हुआ आधी आधा घंटा, मतलब टिंकू आधा घंटा बस। 2:30 उसके बाद स्ट्रीम एंड कर दूंगा। अबीर पता है क्या था? मैं तो कहता था भाई आधी सोने चले जाओ। ये तीनों रात के 3 बजे तक बीसी बैठे थे, और बेचारे का कॉलेज मिस करवा दिया। लाइक कॉलेज मिस नहीं करवाया, पर बेचारे का कॉलेज मिस हो गया। है ना? तो लाइक हमने बोला भाई 3 बजे तक बीसी, पता है क्या है? 3 मतलब मैं 2 ठीक है।
पर वो भी अच्छा है, टिंकू भी अच्छा है। लाइक टिंकू को ना मैं फर्स्ट टाइम बता दूं, मैं टिंकू को लाइक मिला हूँ 3-4 महीने पहले, 3-4 नहीं मतलब आई थिंक अप्रैल में मिला हूँ इसको। लाइक मैं तेरे को अप्रैल में मिला हूँ ना। Allow me to intervene. आप आए, आप पहुंचे नहीं। आई गेस वो आप थे जो ये नवल्यू है। भाई तो बाय द वे लीग ये कह रही हैं कि इस बार हम नेशनल लैंड में वो अननोन गॉड को भी मिलेंगे। एक ही है मेरे पास बाय द वे। दो मिले, दो और चाहिए। लाइक 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। और मेरे पास अब एक और ये वॉकिंग मून वाला है जो तो मेरे को ये फिर सैनोरिटा पॉट से वो लेके आना पड़ेगा। नहीं सैनोरिटा नहीं, वो स्पेनिश वाला वर्ड नहीं। रुको वर्ड पढ़ने दो। सैनरिटी पॉट, सेरेनिटी नहीं। मेरे से बोला नहीं जाता। मेरे से लाइक थोड़े वर्ड्स प्रोनाउंस सही नहीं होते, ठीक है। मैं सैनोरिटा मेरे को सैनोरिटा का मतलब पता है, ठीक है वो क्या है। इतनी तो मैं गेम्स खेलता ही हूँ। ये सैनोरिटा, ये टी से ना, रुको भाई ऐसे मत बोलो। रुको मैं वो रिजाइन लेके आया क्योंकि ये आखिरी रिजाइन है ना मेरा। क्या हो गया? वही मैं बताता हूँ, मेरे को पता है कि वो कैसे साउंड करते हैं, माइंड में भी पता है। पर जब मैं बोलता हूँ ना तो कुछ अलग ही निकलता है। तो वो अलग ही निकलता है। लाइक ये मेरे साथ आज से नहीं हो रहा। ये कल से ये लाइक छोटे होते से हो रहा है सेनोरिटा। साकिब आप भी मजे मना लो। गाइस अब मेरे पास एक आखिरी रिजाइन पड़ा है। एक आखिरी रिजाइन पड़ा है, तो इसका मैं क्या करूं? लाइक मैं कौन से वीकली बॉस पे लाऊं? क्या कर ले? प्रीमो जैम से नहीं, प्रीमो जैम से मैं करने भी नहीं वाला। तो कहाँ से लाइक ये जो मून्स हैं ये बना नहीं सकते क्या? हाय क्या है? हाँ वो ट्रू के साथ डोमेन करते मेरे को 20 मिले थे। 20 के 20 सारे अड़ा दिए एक दिन में। नहीं आई मीन 3 दिन में। गाइस रुको, सी माय ट्रैवलर। इट्स 8 13 13।
रुको रुको रुको, हाँ रुको रुको रुको, वर्ल्ड ज्वाइन 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 करो, रुको मैं आ गया, हाँ अब ज्वाइन करो। हाँ हाँ, 8 8 13 13। पता है, मॉम गेम। आ जाओ साकी फिर से। वो एक्चुअली पता है क्या है, मैं बताता हूँ। ट्रैवलर एक 5 स्टार है, इसके अलावा मेरे पास कोई 5 स्टार है नहीं। डैमेज देता है यही देता है, और मैं 1 लाख प्रीमियम जेम्स की जर्नी सेव कर रहा हूँ, पर तब तक तो मैं ट्रैवलर ही यूज करूंगा, तो मैंने ट्रैवलर को क्राउन किया है। हाँ पता है, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, पर लाइक फिलहाल तो स्ट्रगल स्ट्रगल चल रहा है ना, तो लाइक सम थोड़ा सा वो करूँ, अब मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पास अराउंड 40 की हैं। हाँ, विशेष मेरे मेरे पास है 120 30। नहीं नहीं, विशेष एक 120, 120 30 है। हाँ रुको, सिंपल 53 है, एंड ब्लू वाली 72 है। एंड स्मूरू ट्री से मेरे को 20 30 तो और मिल जाएंगी वहां से, स्मूरू वो ट्री से। मत नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ कि 100 पुल से निकाल के सेव करूंगा ना। हाँ मैं मैं मानता हूँ, पर वो एक्चुअली मैं वाईटी का भी थोड़ा। बात सुनो, चलो ठीक है, अगर ये मेरी 100 ये होती हैं तो मैं लाइक स्पिन कर दूंगा। नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ। अगर व्यूज ना मिले तो। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शुरू 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 कर रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला। मैं रिकॉर्डिंग शुरू शुरू कर रहा हूँ। रुको 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 रुको। गाइस, अगर मेरे को व्यूज ना मिले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ट्रू भी देख रहा है भाई। गाइस देखो, भाई देखो, अगर मेरे को अच्छे करेक्टर्स ना मिले, मैं सबको पीटूंगा आगे, क्योंकि मैंने ढाई मही मैंने 2.5 5 मंथ से स्पिन नहीं किया।
टिंकू सुन रहा है? Okay, guys, here we go. Here we go. Here we go. Guys, I'm starting my recording. देखो या देखो 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 बात सुनो। मैंने पिछले 2.5 मंथ से स्पिन नहीं किया, ठीक है? एंड अगर मेरे को अच्छे व्यूज ना आए तो मैं किसको पकड़ूंगा भाई, क्योंकि मैंने पेशेंस रखा है भाई। तुम लोगों को तो करेक्टर्स देखना है भाई, पेशेंस तो मेरा गया है ना। टिंकू सुन रहा है? लास्ट मैंने शुरू में 20 वो बिगिनर्स वाला किया था, उसके बाद मैंने एक भी स्पिन नहीं किया। भाई जनवरी के प्रीमो चैंप पे लोन लेगा क्या? नहीं। तो मैं शुरू करूं फिर? भाई मेरे को डर लग रहा है, देखो यार, व्यूज नहीं मिलने वाले। भाई बात सुनो, देखो 70, भाई 70 पीटीस पे कितने व्यूज मिलेंगे भाई? नहीं मिलेंगे व्यूज। चल ठीक है, अभी शॉर्ट वीडियो डालूंगा। अभी शॉर्ट वीडियो डालूंगा। बात सुनो, बात सुनो, शर्त करो, अगर व्यूज मेरे को शॉर्ट वीडियो डाल दो, 2000 से ज्यादा व्यूज ना आए, सभी 500 दे देना। शॉर्ट पे। हाँ हाँ, क्यों? मैं सैंडल वाला को सुनो। हाँ हाँ, मैं सेव कर रहा हूँ क्यों उसके लिए, ठीक है? सुनो, मैं स्टैंडर्ड बैंड निकाल रहा हूँ। सुनो, सारे 500 देना अगर शॉर्ट पे 2000 व्यूज ना आए। बात खत्म। भाई मेरा पेशेंस तुम टेस्ट कर रहे हो क्या? शॉर्ट भी बनाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है? भाई मेरे देखो, तुम सभी के ठीक है, रुको। सारे 500 देना, याद रखना ये बात। चलो, चुप। साइलेंट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अभी सबकी आवाज आएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिकॉर्डिंग रुको, रिकॉर्डिंग 1 2 3 स्टार्ट। I'm Kirara, a courier for Inazuma's Komani Express. I'm Chevres, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol.
You smell nice. भाई क्या घटिया चीज निकल गई। चलो कर लो माइक ऑन। भाई देखो अब मेरे को व्यूज है ना मिले, देख लो। रुको 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 रुको, एक मिनट जाने दो जाने दो। मैं कौन सा खरीदूं? You got an extra weapon. Yeah, right, Abhishek. I just got Aquant. स्टार्ट स्टार्ट डस्ट से, जस्ट स्टार ग्लिटर से टाइटल डालना, स्टैंडर्ड बैनर स्कैम स्टार डस्ट।
स्टारडस्ट ठीक है। हाँ तो अब मैं इनमें से अच्छा हाँ 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 रुको हाँ हाँ स्टार बीट हाँ हाँ वो हाँ वो नहीं करना ट्रू रुको एक मिनट इंटरवल ग्रीन था वो उसके लिए मैं वीडियो सेव कर रहा हूँ अभिषेक रेजर तो घटिया है भाई रुको ट्रू की चैट पढ़ने दो करैक्टर से ठीक ठाक गुजारा हो जाएगा हाँ अब ये मिली है भाई व्यूज अच्छे मिल जाए मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई मैंने तुझे एक नायडा प्लस रंगीन वाली आईडी नहीं नहीं ब्रो नहीं मैं पहली आईडी नहीं संभाल पाता एंड मैं लाइक ये सारा वाईटी के लिए तो ये तो मैं उस पे वाईटी का वो नहीं ना कर पाऊंगा लाइक मैंने अपना मेन अकाउंट छोड़ दिया उस पे मेरे पास वो था क्या कहते हैं उस पे मेरे पास क्या कहते हैं वो क्या था लाइक 7 कैरेक्टर्स थे सो मेरे को ना 3 पेट्स और चाहिए आई थिंक पता नहीं 2 या 3 ही मिला इतना कुछ ऑटो एड कर रहा हूँ अच्छा मैं मैनुअली कर रहा हूँ ये लो कर दिया फिर कर दिया गाइस मेरे को पीढ़ी दे दो नहीं दे रहे यार रुको रेजर तू ही अपग्रेड हो जा नहीं हो रहा नहीं हो पा रहा वो मटेरियल मांग रहा है चलो अब फाइनली नींद आ जाएगी तू सफर नहीं तू सफर नहीं होगा हाँ हाँ क्यों चलो अब सो जाओ किस किसका सिग्नेचर है रुको पहले इसको अपग्रेड कर लूं 1 1 मिनट हाँ करेक्टर स्क्रीन पे गया कर वेपन बैनर देख देख एक बार हाँ हाँ मेरे पास 2 है रुको कर दिया कर दिया फोटो फोटो देख क्या निकला हाँ ये उसका वेपन निकला है वो एक्सियो का जो प्राइमरी वेपन है ये उसका ही वेपन निकला है ना
इसके लिए मेरे को डोमेन करना होगा। हाँ, कर लिया, कर लिया। तो मैं कहता हूँ अगर 10 की और पुल्स मारूं, मैं अभी मार देता हूँ। नहीं भाई, कर सकते हो। जांगलिंग यही है ना, जिंगलिंग। अच्छा, ये लो फिर। नहीं भाई, कर सकते हो, लियो शॉप। अच्छा, वहां मैं रुकू, मैं करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, वो सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्या कहते हैं, ड्रैगन मेन। किधर है, यहाँ ये रहा। हाँ, एंड सॉरी किसी का चैट मिस हुआ तब। भाई मेरे को ये, भाई मैंने 2.5 मंथ्स पेशेंस रखा है, अब मैं इंटरविल पीटीस के साथ कुछ नहीं छेड़ने वाला। रुको, वो सोलो जा रहा हूँ जैन। रुको, मतलब वो मैं खरीद नहीं पा रहा। नहीं नहीं, मतलब वो सामान नहीं खरीद पा रहा। हाँ। किधर है, वेपन, नहीं नहीं नहीं, स्विच एंजेंट्स। अब अभी भी दो और कम है। दो कम है। नहीं पड़े हैं डिजाइन तो। लाइक एक 35 है और एक 60 है। कल कर लो, मंडे है कल। हाँ, मैं मतलब अभी थोड़े से 5-10 मिनट पड़े हैं, तो लाइक थोड़े से अभी कर लेता हूँ ट्रू, एंड थोड़े से बाद में। क्या जैन? आर्टिफैक्ट्स की तो मंडीर पड़ी है। ये देखो, ये सारे अभी करते हो। ये देखो, ये सारे अबीर नहीं करवाए थे। लाइक कुछ मतलब 60-70% अबीर ने करवाए थे, और बाकी सारे लाइक जितने भी मेरे सब्स हैं। देख भाई, 3 बजने वाले हैं, मोए मोए हो जाएगा। हाँ, बस मैं स्ट्रीम एंड एंड कैंड कैंड कर रहा हूँ 5-10 मिनट में। लाइक मेरे पास सबसे बेस्ट आर्टिफैक्ट पता है कौन सा है? सबसे बेस्ट, मैं बोलूंगा कि ये वाला। हाँ, 3। एंड एक मेरे पास फ्लावर भी है, रुको। इस पे एलिमेंट एक ये भी है। एक ये है, एक ये है मेरे पास। अच्छा। हम्म, वही सीन है। वही सीन हुआ है। और मेरे पास ये एक और है, पर ये डिफेंस में है। गुड नाइट रूम पे मैं। गुड नाइट रूम। एंड एक मेरे मेरे पास ये है। एंड ये फ्लावर में मेरे पास सबसे अच्छा है। 28 क्रिक डैमेज। हम्म। हम्म।
बेटर नहीं यार कहाँ साखी एक ये भी अच्छा आर्टिफैक्ट है पर ये सारे टैक्स वाले आर्टिफैक्ट्स हैं सीन वो है ना क्या 6th फ्लोर फर्स्ट चैम्बर गाइस अभी एक वीकली बॉस करना है या नहीं करना मतलब एक कर लेते हैं आखिरी फिर मैं सोने जाता हूँ मतलब ये आखिरी वीकली बॉस कर लेते हैं फिर सोने चले जाता हूँ अभी साखी आ रहे हो हाँ हाँ नहीं नहीं प्रीमो जैम्स नहीं वो एक और पड़ा है वो वीकली वाला वो रिजाइन वीकली वाला वो जो सेन सेनरीटा पॉट से उठाया है अच्छा वही मैंने पुल भी की टिंकू अच्छा तो फिर मैं रहने दूं ये वीकली बॉस करना है जब कोई आ रहा है कल ठीक है फिर मैं स्ट्रीम एंड कर दूं ना हाँ हाँ बस एंड एंड कर रहा हूँ स्ट्रीम अब चलो बाय एवरीवन सी या गुड नाइट तानु मिलने सारे अगली स्ट्रीम टाटा